So, hello and welcome to Let's Crack Bengal exam. So, good morning, wish you a very good morning to all of you, and welcome to the what I would say Let's Crack Bengal. That is the WB exam YouTube channel of Unacademy. Crack all West Bengal exam with us. We are having top educator quality of content and great learning experience. So, let's begin the today's marathon session. So I have started the marathon session for the what today the last and I would say the 31st of December the 2020, and what we have to say the goodbye to the 2020 and to welcome the 2021 and the 2021. Okay, so in that or on that note, I would say we have to recap what we learned in the past, what were the topics which were trending there for the 2020, that we have to have recap of those topics. That would be, I would say, very useful for the coming exam. Either it would be, I would say that particularly it would be WB exam and your UPSC and other exams as well, like the what it would be. It might be the secretariat, it might be the what any others as well. Okay, so hope this would be one of the most useful videos, and we will continue. This class will be run for the 3 hours, and subsequently I will try to cover what all the recaps of the 2020. I will do it. So today we will talk about that is the recap of 2020 through the marathon session with 3 hours of the marathon session, and I will go through what the important major topics which took place in the 2020, and that would be the helpful for the coming exam. So let's crack WB exam, crack WPSC with India's largest learning platform. Get Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from the Indian best educators. So as you know, okay, before I comes to the content or add this to the PPT, I have to go through briefly through the what subscription page. Then I will come to my what I would say the topic of the day. I would say the courses, and it would be PPT. Okay, so let me go through the first, that is the what subscription piece. Then I will come. So crack that is the let's crack WP exams, crack WPSC exam with India's largest learning platform with Plus subscription. How to subscribe for the Plus? Okay, if you want to have that idea how to subscribe, simple. You have to go to the Play Store of your device. Okay, go there and download. What you have to download? You have to download Unacademy Learning app. Then install. Okay, then you have to install it. Install and open. Then what open? Then you have to search. There would be a right top of the screen. Let's say this would be the screen of your device. The right top there would be search option. So search it here. That is what? That is WPSC. Search it here, and then there would be a get subscription option. There would be what? Get subscription option. So hit it here, or I would say click it here, and you would be directed towards the payments. Once you have paid, your subscription is done. The procedure is simple and quiet, as I have mentioned. First, you have to go to the Play Store of device. Then you have to what I would say simple download, that is the Unacademy Learning app. Okay, then install it, then open it, then search for the what WPSC, then get subscription option. वहाँ पे होगा, बस वहाँ पे आपको click करना है. Then there would be a payment option. Okay, there would be a payment option. So there you have to click, and once you have paid, your subscription is done. So hi, my name is Shibsankar Hazra. I did my I would say what graduation with the history honors and post graduation with social linguistic. I have been mentoring for the OPSC. I would say what that is the PCS aspirants since 2017. Okay, I have guided many aspirants to their I would say what success or the destination. I've worked in different institutions. Okay, since then I do guide the aspirants on I would say what that is the GS, optional geography, essay, and current affairs. These are the area where I do guide the aspirant. Okay, so what you will get once you get subscribe, let's say you have subscribed. Okay, once you have subscribed, what you will get? You will get what you will get. So this would be the top. What you will get? You will get daily live classes. Okay,
where the feature would be daily life classes. The life classes, I would say, it would be include, this is a special class. You will have what I would say plus course. This would be also there. Then apart from that, YouTube. Apart from that, what it would be YouTube. So okay, so there would be daily life classes would be there, where the feature would be, I would say, what it would be the feature you can see, where you can chat with your educator, you can engage in discussion. वहाँ पे आप discussion भी कर सकते हो, पूछ सकते हो अपना जो doubt वगैरह है, queries है. You can ask okay directly to the educator, and also you can also participate in the answer poll. So these are the what I would say the daily life classes का ये feature है, बिल्कुल आप देखना होगा, है ना. So structure course, next we will talk about the structure course. All our courses are structured in line with the exam syllabus to help with the best prepare for that. That means structured course means what? Structured course means, when I say structured course, okay, so structured course means what? That means the syllabus is such a way, it's designed, what it designed in such a way that it will complete, your syllabus will be complete of, and what I would say the topic or the courses which are being made by the educator, they are always, they keep in their mind that your syllabus and your question pattern would be taken into the care as well. Okay, then live test and quizzes. To evaluate your preparation through our regular mock test and quizzes, get detailed analysis of your performance. Okay, that means once you have got substantially, you have learned, then I would say the major part is that testing yourself. That means you have to also test for yourself. So that could be tested through the, I would say, what, through the regular mock test and quizzes, unlimited access. Once you get subscription, you would be able to access all the live and recorded courses to us from the comfort of any of your devices. Either it could be your mobile, it could be your tab, it could be your what I would say laptop. So any kind of device. Okay. So PC वगैरह हर कहीं, मतलब किसी भी डिवाइस से आप access कर सकते हो. Apple iPad से भी वो भी हो पाएगा ना. देन हम देखेंगे कि फॉर लाइव क्लासेस में क्या दिखता है. जैसे कि फ्री लाइव क्लासेस, यू कैन हैव द, if you have subscribed, you can have the free live classes. Here you can see, so those educators, they are taking live, or those who are present live, they would be looking like this. Those who are going to be but live, I would say, they would be looking like this. Okay, these are the educator को देख लेते हैं. So educator profiles में आप देख सकते हो, ये कि this would be the educator profiles. Okay, so you can surely you can watch that. What I would say, simply आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो जैसे कि वट अर्पणस का, उनका कितना 5 मिनट है, फॉलोअर कितना है. देन वट दैट इज द सोवन रॉय, इनका भी देख सकते हो. जैसे कि मतलब एजुकेटर का जो प्रोफाइल है ना, ये कितना घंटा उन्होंने पढ़ाया, कितना फॉलोअर है, सारे आप यहाँ पे देख सकते हो. Then if you are interested to the batch, join the batches, that there is the number of batches has been drawn, you can have the batches. जैसे कि आपको ये दिखता होगा, so batches for the what SI मेन एग्जाम, दैट इज द व्हाट WPS का SI के मेन एग्जाम के लिए ये कोर्सेस है. यहाँ पे आप सिंपल यू हैव टू व्हाट एनरोल, आप एनरोल करिए, देन यू कैन वॉच इट. देन एनरोल आल्सो दिस बैच. ओके, एंड वॉच. So these are the batches is been run through our what educators, or that is the what phenomena educators. You can just catch them and learn them as well, learn from them as well. Okay, so that's the idea, that's the matches. You are getting this kind of features. So apart from that, your comprehensive what I would say, your syllabus would be completely covered up. That does not mean you would be left in between of the mid-C, so that would be not fine. It would be courses are also already there. Okay, so number of courses 122 courses for the quant, for the history 93, for the quality 88 courses are there. You can watch also these courses. And the major benefit of this, that this courses is not made by a single educator. There might be 4, 5, 6, 10 educators, those who are teaching single subject history. In the physical class, what does it happen is that I would say happen. One teacher, what I would say simple, I would say one teacher will teach the history, and if you are not liked by the what work of that teacher, then you have to also, you are getting no other choice. Simple, you have to go through that as well. So okay, that is here you are getting option, I would say, but you are getting option. So number of option you are getting, and also you are putting and saving your time. Okay, in this particular time, that is the COVID-19 situation. Okay, so it would be very useful. Okay,
So then I will talk about track your preparation through the mock test. Okay, simple. Without this one, the complete I would say preparation would not be complete. You have to go through the mock test, so that's your preparation. Okay, your preparation would be maturity. Will comes to your preparation, you would be more confident, and you would be able to find out what exactly the things are lacking, and you can also improve them subsequently. Okay, so we are providing that is the what free mock test for the WPSC's main एग्जाम के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ऐसे नहीं कि इस साल चल रहा है अगले साल नहीं होगा. Okay, that would be time would be the best. So I would say, what are the Unacademy advantages you are getting? You are getting the schedule work. When I say the schedule work means what? Simple, I would say schedule work means, simple means what? When I say the schedule work, that means that simple, you have to follow the educator. Just for the example that I have started at the 10 a.m. today's class, which would be run up to the 1 p.m. Okay, simple like that. There might be some other educator, those who will start at the 1 p.m. or 2 p.m. or 3 p.m.s or the evening classes, morning classes. These are the what number of topics already, what schedules are given. Simple, you have to follow them. Just you have nothing to do with that. Simple, follow, and your syllabus would be completed off. अनअकैडमी पे बाकी एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है. यहाँ पे आप इंग्लिश पे सीख सकते हो, हिंदी, बंगाली. दीज आर द टॉपिक्स, सॉरी आई वुड से द लैंग्वेज. सो लैंग्वेज मतलब डज नॉट हैव एनी here what barrier. Learn anytime, everywhere. That means आप कभी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो. कैसे आपको डाउनलोड करके रखना है, जो भी हम पढ़ाते हैं ना, उसको सिंपल you have to download and keep it, and you can also watch it later. Then what would be the other feature? Other feature is that you can interact with your educator. Simple, you can interact with your educator. Okay, so you can chat with your educator, engage in discussion, and ask your questions while the class is going on. So this one I have already told you. So get your doubts to be clear as well. This is one of the most important fact. I would say what things of the students, they way to ask the doubt, and that would be that shyness will kill you in the coming days as well. So you have to come out to frankly and ask. So if you are getting any kind of doubt, that would be clear, immediately answered. Okay, but yes, this feature are the live class feature. You can't avail this at the what or in the recorded one. लाइव टेस्ट वगैरह ये भी आप दे सकते हो, और उसका एनालिसिस भी आपके पास होगा. जैसे कि इफ सपोज you have joined the live test and how many score you have done, that is the what I would say you would have given also your, that means the result. You can also and analyze your preparation, how the preparation is going on. So you can also identify what are the exactly I would say the strong and the weak areas through that. Then you will also able to get the PDF of the learning material. That means the things which we are putting here. You can also get the PDF of this topic, so that it would also benefit. You can also learn it at any time, everywhere. So that's the benefit you are going to have. Okay, the last slide of the subscription fees, then I comes to my topic. उसके बाद मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा. बस ये स्लाइड हम देख लेते हैं. WPSC के लिए सब्सक्रिप्शन जो प्लान है, प्लान 1 मंथ के लिए क्या है, दिस साइड है ड्यूरेशन. I would say this side would be the duration, this side is the fees. Okay, so for the fees you can see for the 1 month duration it would be 1900. For the 3 month it would be 4750 rupees. For the 6 month it would be 8550 rupees. For the 12 month it would be 10450 rupees. For the 24 months 15200 rupees. These are the what fees. But on the top of that you can also avail 10% off. ये भी आपको मिलेगा. कब मिलेगा? When you will use my code SS99. Okay, use my code SS99 and get instant 10% discount. Okay, so I'll personally recommend you guys go for the 24 months, because it would be cost effective, it would be more durability, it would be more beneficial, because as you know, okay, but the PCS and UPSC जितना भी होता है ना, civil service examination, I would say the success percentage is 1% or less than 1%. Hence it would be more, it would be what helpful. So that's all of the what today's I would say that is the subscription fees. Now I will come to the topic of the day, recap of 2020. So this is one of the most important sessions going to have, recap of 2020. That means आपको यहाँ पे बहुत सारे information मिल जाएगा जो इनिशियल डेज में आपने छोड़ा होगा 2020 के इनिशियल डेज में. Today I will cover from January to March. Okay,
So and here and there's other important topic as well. So mostly the news are collected, or the current affair collected from, I would say, what, January to March. Then we will also, another part would be taken off by me. That time I will also go through. इसके बाद और एक सेशन हम लेंगे, 3-4 सेशन लेंगे, जैसे कि है ना, फिर और एक सेशन लेंगे, उसमें फिर 2-3 महीने का हम कवर करेंगे, फिर और एक सेशन लेंगे, ऐसे करके हम पूरा 3-4 मैराथन क्लासेस में इनको पूरा खत्म कर देंगे, रिकैप कर लेंगे, पूरा 2020 को हम रिकैप कर लेंगे, ताकि यहाँ से आपका कुछ बेस बन जाएगा, जो करंट अफेयर टॉपिक था वो भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एंड यू वुड बी ऑल्सो रेडी फॉर दैट एज वेल। ओके, सो चलिए अब देखते हैं हमारा आज का जो मतलब फास्ट मैराथन सेशन है 2020 का जो रिकैप है। सो लेट्स सी, फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो है भीमा कोरेगांव बैटल 1818 पे हुआ था, और ये उनका 202वां एनिवर्सरी है। दैट मीन्स यू कैन हैव दिस वन, okay, 200 what second anniversary, that will be the 202nd anniversary of Bhima Koregaon battle. So I would say I will talk about this battle, simple. Okay, let's see this one, Bhima Koregaon battle. Okay, इसको हम देखेंगे। Okay, so Bhima Koregaon battle. So first of all, this was fought in the 1818 in the last Anglo-Maratha war. What I would say, last Anglo-Maratha war. It was the last Anglo-Maratha war. So Maratha wars, it was started, I would say, 1775. It was the 1775. Okay, the Anglo-Maratha war started from here. Okay, then subsequently moved on. Then it would be Treaty of Surat. If you were aware, then Treaty of, I would say, it would be 1782. Okay, then it would be 1803 Salbai. Okay, that is the what I would say, what the peace treaty it would be say. Then it would be subsequently, okay, the Peshwa signs, that is the what, subsidiary alliance in 1802. So Peshwa signed किया था 1802 पे subsidiary alliance treaty, है ना। So उसके बाद I would say what, when the Peshwa of Maratha, they signed, that is what, subsidiary alliance treaty in the 1802, that marks the, I would say, the actual fall of the Maratha empire, or the Maratha, that is the regional power in the hand of the British. But they were, so as you guys are also aware of that Maratha were the 5 brothers, Sindhya, Holkar, Peshwa, Bhonsle, Gaikwads. Okay, so these were the what, they were the 5 distributor powers there that times, and they were one leader, that was the what, I would say, Peshwa used to the what, chief minister. So Peshwa, that means I would say, so after the 1802, when Peshwa signed the subsidiary alliance, which was developed by whom? Lord Wellesley. Okay, Lord Wellesley was the founder of what I would say, he was the inventor of the subsidiary alliance. Okay, in that was what, 1798, the subsidiary alliance treaty, the scheme that would, I would say, the scheme, it was not treaty, it was the scheme invented by Wellesley. That means मतलब मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि भीमा कोरेगांव जो बैटल ये 1818 पे हुआ था, लास्ट मराठा वार पे हुआ था। कब हुआ था? लास्ट एंग्लो मराठा वार पे हुआ था। बस उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि है ना, तो उसके बाद हम देखेंगे, इसलिए क्योंकि अगर इसका हमका बैकग्राउंड पता नहीं होता है ना, तब पढ़ के कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, ये चेन चीज को याद रखता है। जो चीज ना एक चेंज होना चाहिए, चेन बनना चाहिए दिमाग में, ताकि वो टूटे ना, है ना, और उसको हम याद कर पाएंगे। The battle was fought, I would say, the last Anglo-Maratha battle was fought. It was started on the 1st January 1818 between the British East India Company and the Peshwa of Maratha Confederacy. That means Maratha सब लोग मिल गए और okay at the Bhima Koregaon, a small village in the Pune district of Maharashtra. Okay,
A few hundred of Mahar soldier. Mahars were the what? Local community. You have to remember. This is the people, Mahar community. They were the what? They were the low caste people. ध्यान से याद रखना ये बात, क्योंकि अगर इसको याद नहीं किया ना फिर तो आप भूल जाओगे. ये जो महार कम्युनिटी है, they were the low caste people. They were serving in the East India Company led by the British, defeated the massive Peshwa army, okay, led by the Peshwa Bajirao II. Or Bajirao, okay, that is the Stamp victory pillar. That is the what? The Bijay Stamp victory pillar was erected by the East India Company in the memory of those who fought the battle. That means I would say इन लोगों ने कि जो महार कम्युनिटी था, they fought the battle, okay, from the side of East India Company and defeated the Bajirao. Now the Bajirao was the, I would say, the priest class. Those who were, they were what I would say, they were reluctant towards this Mahar community, and they were the what I would say, they were the low section of the society. In 1818, inscripts of the pillars, okay, brought an end of the Peshwa rule. The Dalits, those who follow the B.A. Ambedkar views the battle of the victory of Mahar, injustice, torture meted out by them, the Brahmins Peshwa. That means इस वार को भीमा कोरेगांव को इसलिए भीमा दिया जाता है क्योंकि वो लोग ना भीमराव आम्बेडकर को सोचते हैं उनका what ideologist. That is why they thought that this is the victory over the what Brahmins by the lower section of the society. That's why you have to important and ये आपको याद रखना. Okay, that's the all from this. Now I will comes to the second topic of the day. So I am going through the what particularly I have been मतलब मैं जनवरी मंथ का कुछ टॉपिक कवर कर रहा हूँ. उसके बाद सबसेक्वेंटली हम दूसरे टॉपिक पे भी आ जाएंगे. इन मिशन बोर्ड सेज इसरो. दैट मीन्स जो गगनयान, आपको सबको पता होगा गगनयान. दैट मीन्स व्हाट? गगनयान मतलब जो हमारा मैन्ड व्हीकल होगा. दैट वुड बी द मैन्ड, आई वुड से इट वुड बी मैन्ड व्हीकल. ओके, इट would be manned vehicle. Manned vehicles, when I say the manned vehicle means what? इसमें हम मानव को भेजेंगे स्पेस में. So 4 pilots, I would say what? 4 pilots of the Indian Air Force will leave for the Russia for the month of the receipt of the training as the astronaut for the Gaganyaan. The first Indian crewed flight to the space, as I said, first Indian crewed flight, it will be the Gaganyaan. Okay, so that's it's gonna do the first. So as I said, okay, 10,000 crores of human space flights scheduled to be 2020. पता नहीं ये होगा कि नहीं 2020 पे, क्योंकि because of the overcast condition which is let down or the overspill by the COVID, that is the pandemic COVID-19, so it might be delayed, but it's suddenly going to happen. So how much budget has been given? 10,000 crore for the human space flight. I would say the manned vehicle. Choose astronaut will be sent into the space on board Gaganyaan, a crew capsule to be launched with the help of the geosynchronous solar, that is the GSLV. Okay, that would be what? GSLV के साथ, मतलब PSLV नहीं, GSLV के साथ भेजा जाएगा. If the Gaganyaan is successful, India would become the 4th nation to achieve the feat. Prior to this, Russia, France, okay, they have already done it. USA, आपको पता है ये सब country already. Okay, so that means इन्होंने करके रखे हैं. So that means what? Russia, USA, and I would say most probably China. Okay, they have done it. So India has signed the agreement with Russia, France for their cooperation for the Gaganyaan mission. The DRDO signed MOU with the ISRO to offer the technical and mission, including the food, survival kits for the crew, radiation protection equipment, and also parachute. So these would be things would be provided by DRDO. That means I would say ISRO और DRDO मतलब जो material होगा ना इनका food खाने का लेगा, जो including the space food क्या होगा, सर्वाइवल किट क्या होगा, देन रेडिएशन प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, उसके लिए पैराशूट भी होना चाहिए, है ना, सब कुछ देंगे. मतलब जैसे कि वी मस्ट मेक एंश्योर दैट our, that is the what men, those who are heading towards the space, they would be landed back safely. Okay, so in this first man in the space, that is the Rakesh Sharma, okay, who flew board on, that is what Soyuz T11, launched on the 2nd of April 1984, was the Indian Air Force pilot. What I would say Indian Air Force pilot, that is the Rakesh Sharma. You have to remember it was 1984. Okay, from that is Soyuz T11 launched
2nd April 1984, of the Indian Air Force pilot. He used to be the pilot. Okay, that means those people who qualified for that, and they would be given intense, I would say, training, how to survive in that harsh condition, and how to, they would be all given the training which is required to have the space crew. Next questions. Qassem Suleimani, the head of the Iran elite squad force, killed. So this person is quite in name. ये बहुत ही ज़्यादा नेम पे था उस समय, है ना? So उस समय बहुत ही ज़्यादा नेम पे था ये. Just a minute. So that is Qassem Suleimani, the head of the Iran elite force. इनको kill किया था, किसने मारा था? United States in a drone attack. I would say the tension between the US and Iran escalated after the US air strike killed Qassem Suleimani, the head of the Iran elite squad force, and Abdul Mandi, all that is Muhandis, the deputy commander of the Iranian-backed militant, known as the Popular, that is what, mobilization force of the PMF. इनको मार गिराया कैसे? Through the drone attack. So US ने किया United States of America, USA killed Qassem Suleimani, the one of the, I would say that is the most strongest person, or I would say one of the most that is the loved person by the Iranian people, that is the Qassem Suleimani, who was the head of the Iran elite squad force. इनको जब मार गिराया तो टेंशन छेड़छाड़ हो गया दोनों के बीच में, जो relation है ना, that relation also got super strain, I would say, though the relation was strained after the Donald Trump became the president, and those who cancelled, that is the nuclear agreement, nuclear civil agreement, which was signed in 2016, probably, if I am not wrong. So that was cancelled by the I would say Donald Trump. Hence the tension was already there, and that again hastened, or I would say that was hastened through this Qassem Suleimani death. Then Human Space Flight Center, ये भी होगा Human Space Flight Center India में. So I would say because presently you can see, let's say the Gaganyaan mission, we have sent 4 IFS, that is the pilot, those who would be trained in Russia for the Gaganyaan mission, है ना? तो that means हमारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो नहीं है. So that is why government of India thought it would be better to have established of the Human Space Flight Center in Karnataka. Okay, so ये बिल्कुल आपको हेल्प होगा साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट में. India's world-class facility for the training of the astronaut will come off in, that is Chalakere, a shrubby, arid, oil-seed town in the Karnataka. Okay, that is Chalakere will be a single stop consolidating infrastructure and activities related to the space to travel. It will be a self-contained facilities. They are so in the future, whenever the training and the activities of India is now doing, Russia and Gaganyaan crew to be done here. That means ये जो हमने बोला कि आपको अभी मैंने जैसे कि बोला था कि as we are being the peoples are being trained in the Russia for the the Gaganyaan mission, hope they will be trained subsequently or in the coming days in India, and the other people, those would be willing to have, or if India does have in the future or do plans to I would say for the Gaganyaan mission in the near future, or to send the crew to the space station or the space as well, then they would train in India. So you have to remember this place, that is the Chalakere. Okay, Karnataka. Chalakere is an arid region, so that makes important of this topic. Okay, Karnataka. So that means here would be. So Great Indian Bustard. Next topic of the day is that the Great Indian Bustard. ये भी आपका बहुत ही important topic है, क्योंकि ये सारे topic जो मैंने लिया है, ये सारे के सारे important topic है, सारे के सारे important topic. एक भी टॉपिक ऐसा है नहीं कि काम पे तो आएगा, बिल्कुल आएगा. बाकी ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करो टॉपिक को, है. बाकी none of the topic would not goes in or would not be go in vain. I clearly and I do believe that would not be going in vain. So Great Indian Bustard. The Great Indian Bustard is one of the heaviest flying birds. I would say one of the heaviest flying birds
is found mainly in the Indian subcontinent. The Great Indian Bustard, everybody knows, this is the critical endangered birds found in what? Desert National Park, Rajasthan. ये कहाँ पे मिलता है? राजस्थान पे मिलता है. State part of Rajasthan. Also, central government and the state government of Rajasthan, they have taken completely measures or enough measure to protect of these critical endangered birds, which is confined to the what? Only Rajasthan. The desert area पे मिलता है बिल्कुल. Okay. So what I would say, barely 150 of those birds are estimated to be survived now globally. तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे सिर्फ 150 से मतलब लगभग होगा जो बर्ड्स बचा हुआ है. Today's its population confined mostly to the Rajasthan and Gujarat. You can see the Gujarat मतलब जो कच्छ एरिया है ना, it would be the कच्छ एरिया, रन ऑफ कच्छ है ना, जो डेजर्ट वाला पार्ट के साथ लगा हुआ है. So small population also occur in the Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, लेकिन यहाँ पे मिलता नहीं है. लेकिन जो यहाँ पे लिखा है ये माइग्रेट होता है. ध्यान से याद रखना, जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है वो सिर्फ राजस्थान पे प्रेजेंटली मिलता है. गुजरात को कच्छ एरिया में कभी कभी आ जाता है वो, बट दे आर नॉट हैबिटेंट ऑफ दैट रीजन. ओके है ना, ये कभी घूमने आ जाते हैं. ओके, अलॉन्ग द व्हाट, दैट इज द चिकी रियरिंग सेंटर ऑफ जैसलमेर. ये देख सकते हैं, मतलब जैसलमेर सेंटर है, वहां पे कैसे उनका पाला पोषा किया जाएगा, उनका पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएंगे. देन सोरसन इन द राजस्थान हैज आइडेंटिफाई द मोस्ट कंडूसिव साइट फॉर देयर रियरिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज सोरसन, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द ग्रासलैंड access to the road and well suited climatic condition. So what is the condition needed for the Great Indian Bustard? Great Indian Bustard को अगर आपको पूछ लिया ना कि ये critical endangered कैसे हो गया, how Great Indian Bustard become the critical endangered, whether this is critical endangered, बिल्कुल है, whether ये क्या साइट पे आता है, ये साइट अब दिख रहे हैं, दैट इंटरनेशनल जो endangered species का ट्रेड को बैन करता है. व्हाट, ये आपको लिस्ट करके रखे हैं अपेंडिक्स 1 पे. And what I would say, Wildlife Protection Act 1972 also put its Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act पे भी इनको रखे हैं. That means इनका population अगर कम हुआ किसके वजह से? Because of the pesticide, because of use of pesticide, insecticides, है ना, grassland का कमी हो जाना and uncontrolled use of the, okay. उसके बाद उनका जो फूड हैबिट है ना वो खत्म हो गया, उनका जो फूड है वो खत्म हो गया. दे आर अटैक्ड बाय द डॉग्स, फॉक्स, है ना, पोचिंग भी हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ द हाई वोल्टेज पावर लाइंस, मेजर थ्रेट्स टू द, दैट इज द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड. मतलब इनका पॉपुलेशन कम होने का जो वजह है वो है डिक्लाइन ऑफ द हैबिटेशन. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. Habitation जब मतलब डिक्लाइन होगा, obviously food would be declined and they are also getting attacked through the what I would say, that's the wild dog, foxes and human being also, they are getting electrocuted through the high voltage. Yes, as they have found in the Rajasthan and Gujarat. Okay, Great Indian Bustard हो गया, साइड पे है, 1972 पे है, ये सब हमने बोल दिया. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो, दैट इज द इंडिया डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. दैट इज द व्हाट, इंडिया डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, IDRSS. India plans to bring its own system of the space-to-space tracking communication of its space assets by putting off new satellite series called IDRS. ये बहुत ही ज़्यादा important. Again, I repeat, this is going to most important point of one of the what, when you are writing or the what success of ISRO. Okay, when you are writing just success of ISRO, that time you can have this one, you can write this one, IDRSS. It's basically a set of satellite that will track and send receive information from the other satellite. बाकी जो satellite है ना, जैसे कि India is one of the, I would say, the emerging fastest emerging country is gonna to have what the that is the what I would say, to maintain the international peace, prosperity, and to develop the cooperation. वगैरह जो भी है ना, तो India will aspire to become the one of the most developed country in the world in the coming days, and also to increase the its potential in the term of the space as well. Because okay, so in that line I would say, so country like India is subsequently and frequently they launch the satellite. Either it would be communication satellite हो गया, एक resource sat हो गया आपका, है ना, कोई अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, तो ये सारे जो सैटेलाइट हम भेजते हैं ना, एंड डिफेंस वाला भी हो गया. ओके, तो इन सबके सबका डेटा भी हमारे पास होना चाहिए, वेदर दिस मतलब सैटेलाइट्स आर फंक्शनिंग वेल और नॉट, व्हाट आर द प्रॉब्लम इज गोना टू हैव देयर. ओके,
or any kind of information. That means we will have a satellite, those will track other satellite, so that their safety, their information would be collected and that would be resent. Okay, information of the other satellites. The two satellite of IDRS is planned to track to be constantly in touch with the Indian satellite, it particularly those low orbit. Low orbit means I would say 200 kilometer to the 12 what it would be 100 kilometer. Okay, from the 200 to the 1200 kilometer, so it would be okay, like that it would be 1200 kilometer, it would be your low orbit satellites. So it might sometimes goes up to 12,000 as well. So IDR satellites of 2000 kilogram class का होगा, to be launched from the GSLV launcher geostationary orbit around the 200 मतलब 36,000 किलोमीटर, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था कि जो जियोसिंक्राइज ऑर्बिट होता है उसका मिनिमम हाइट होता है व्हाट आई वुड से 35,000 से लेके 36,000 मिनिमम होना चाहिए, वहां पे उसको प्लेस किया जाता है ताकि इट वुड बी सिंक्रोनस विद द अर्थ, द स्पीड ऑफ द अर्थ, it would match everything. The first beneficiary would be the prospective crew members of the Gaganyaan mission का जो होगा ना, उनके साथ हमने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, कंटिन्यूअस इन टच ऑफ द मिशन कंट्रोल थ्रू आउट देयर ट्रैवल. उनका जो ट्रैवल होगा, उनका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब हम we can also assess that. It will be useful in monitoring the launches and that is the vital for the ISRO, which has planned in feature several advanced low orbit mission such as the space docking, space station हो गया, as well as the distance expedition to the moons, Mars and Venus. ये सारे जो एक्सपेडिशन होगा ना, तो स्पेस वहां पे एक सैटेलाइट होना चाहिए. सो दैट इज द इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट होगा, द सैटेलाइट दैट विल ट्रैक other satellite, the satellite that will collect information from the other satellites, and that would be helpful for our गगनयान मिशन हो गया, चंद्रयान हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, जो भी है ना. जैसे कि हबल टेलीस्कोप, आपको पता होगा हबल टेलीस्कोप, ये घूमता रहता है और डेटा कलेक्शन करता है, और स्पेस में और एक सैटेलाइट होगा, उनको भेजते रहते हैं. देन वो स्पेस बट अर्थ को भेजता है. लेट्स से दिस वुड बी अर्थ, लो ऑर्बिट, मिडिल ऑर्बिट एंड हाई ऑर्बिट. I would say high orbit, it would be 36,000 kilometer. It would be 200 to 12,000. It would be like this. Okay, up to that means it would be up to 36,000 and more than 36,000 above. It would be a geosynchronous orbit, जिसको बोले जाते हैं अर्थ से 36,000 ऊपर जो है था ना ऑर्बिट, उनको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. तो कुछ भी जितने सारे सैटेलाइट व्हिच इज बीन सेंट बाय इंडिया और व्हिच हैव लॉन्च्ड बाय इंडिया, इनको ट्रैक करेंगे. क्या कौन सा सैटेलाइट होगा, इसका नाम होगा IDRSS, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. सो दैट किसी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसमें कुछ कमी है, सब हम करेक्ट कर सकते हैं, और हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़े फायदेमंद होगा, है ना. बहुत इज गोना टू हैव वन ऑफ द I would say but game changing in the space technology and the space mission, particularly I would say the space mission. प्रवासी भारत दिवस सबको पता होगा, प्रत्येक ईद साल 9 जनवरी है ना. पहले तो मैं जनवरी मंथ का देख रहा हूँ, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, इतना हम आज कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो प्रवासी भारतीय दिवस सबको पता होगा 9 जनवरी ईच ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों, है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज व्हाट आई वुड से कम्युनिटी. इस डेट को क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑन दिस वेरी डेट महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915. I would say 1915. Okay, in 1915 Gandhiji returned from the South Africa after developing the idea satyagraha. Okay, the idea satyagraha and the idea of what satyagrahi that was developed, and the technique for the satyagraha which evolved within the Gandhiji, or Gandhiji evolved while he was there in fighting for the Indians in South Africa. So on that particular day, I would say on the January 9th, he chosen the day to celebrate the occasion, since this was the day 1915 Gandhiji returned from the South Africa, as I said, for the freedom struggle. उसके बाद उन्होंने आएंगे, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया. These are the movement he will took part. Non-corporation movement हो गया, civil disobedience movement हो गया, है ना. Then I would say either he also took part in this round table conference, second round table conference. Then it would be Quit India movement. सारे movement को उन्होंने चलाया. Then that would be marked the Gandhian phase. So Gandhian phase start from 19 to it would be 40.
you can say after the 47, that was the what Gandhian page, है ना. So that is where Pravasi Bharatiya Divas, है ना. So those Indian, those are the overseas Indian, their contribution for the development of the making the nation, strengthen the engagement with the Indian overseas community के साथ हमारा bonding होना चाहिए. Then why we are developing this? If I put a simple question to you guys, okay, why should we develop the what good relation with the overseas Indian community? Whether that is required? Yes, because India is the world largest what, that is the, अब सबको पता होगा, India is having one of the largest what community, okay, international community throughout the world. And also remittance, what remittance सबको पता होगा, India receive highest remittance in the world, what, and China is the second, China is the second. And what I say, इंडिया रिसीव हाईएस्ट रेमिटेंस. रेमिटेंस क्या होते हैं? जो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा घर को भेजते हैं, रेमिटेंस होते हैं. सो दीज रेमिटेंस आर कमिंग फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी, दोज हु आर रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया. ओके, देन ये लोग जो इंडियन कम्युनिटी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए होता है, ये लोग पॉलिसी सेव करवाते हैं. दे आर एंगेज इन द सेविंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. Those Indian, those who are living in USA, they are also having share to formulation of the policies of the United States of America that would be suited for the interest of the India. Are you getting my point? So that is why, as we are having one of the strongest rich community in USA, so USA can't be shy away to help India in any major cases. So that is why they're bound to help. Like say, let's say Kamala Harris is going to have, or going to be, or she is going to be the first Indian origin, I would say, the vice president of USA. So that makes the what importance of the Indian community. That means ये Indian community का what I would say जो importance, जो महत्ता वो दिखाता है ना. इसलिए प्रवासी भारत दिवस ईद साल किया जाता है, to recognize their contribution in the various field. Okay, that's all. Next हमारा टॉपिक है, that is what रान उत्सव. ये क्या है? या ऐसे छोटी छोटी टर्म्स ना आपको पूछा लिया जाता है एग्जाम पे. ये रान उत्सव क्या है? रान का मतलब क्या है? रन ऑफ कच्छ. रान का मतलब क्या होता है? रन ऑफ, आई वुड से व्हाट, कच्छ. सिंपल आई वुड से रन का मतलब होता है रन ऑफ कच्छ. ओके, दैट इज व्हाट इट वुड बी रन ऑफ कच्छ. सो रन का मीन्स आई वुड से व्हाट, run of Kutch. So run of Kutch. So run of Kutch, everybody is known. This is the Marsi Saline region, a Marsi Saline, and it would be in the day, मतलब summer period, desert पे convert हो जाता है ना. So Gujarat Tourism Department conducts largest salt desert है, Great Run of Kutch है. Celebrate the cultural and artistic heritage of the Kutch. The activities include the folk dance, मतलब जो local dance होता है, performance, handicraft shopping, star, and the gauging, and also the what sightseeing मतलब आप देख सकते हो. तो ये सर दैट मीन्स सिंपल, उनका जो कल्चर है, उनका जो यूनिक है, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, बहुत सुंदर, उसका नाम है आघार कम्युनिटी. ये याद रखना, आघार कम्युनिटी. आघार कम्युनिटी, दे लिव्स इन रन ऑफ कच्छ. Why this community importance? Because they are the salt making community. ये याद रखना. और ये these are the what I would say, these are the deprived section of the society. उनका जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत कमजोर है. वो लोग पोर सेक्शन है. दे आर मेजोरिटी पीपल्स आर द पोर, बहुत पोर है. पानी यहाँ पे समर सीजन में पानी मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत होता है लोगों को पानी वगैरह मतलब कलेक्ट करना, पीने के लिए, खाने के लिए. तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं वो लोग. बट ओके, सो दिस आहार कम्युनिटी, ये भी मतलब आपको यहाँ पे दिखता है. सो दैट मस्ट फॉर द रन ऑफ कच्छ. और आपको पता होगा रन ऑफ कच्छ ऑल्सो व्हाट सेपरेटेड फ्रॉम, आई वुड से, फ्रॉम द सिंध प्रोविंस थ्रू द सार क्रीक. व्हाट आई वुड से, सार क्रीक. ये भी आपको पता होगा, सार क्रीक भी न्यूज में था. इज इट ओके विद दिस? सबको पता है ना सार क्रीक? सार क्रीक जो इंटरनेशनल लाइन है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान. थालवेक प्रिंसिपल भी है वहाँ पे, थालवेक प्रिंसिपल, ये भी मैंने पढ़ा के रखे हैं, ये भी आप देख सकते हो. अकॉर्डिंग टू द थालवेक प्रिंसिपल, जो मतलब जो आपका जो सार क्रीक है ना, इंडिया के हिसाब से मिडिल से इंटरनेशनल बाउंड्री जाना है. पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, ईस्टर्न पार्ट से जाना है. सो दिस इज अ डिस्प्यूटेड, आई वुड से, टेरिटरी. ओके, सो लेट्स सी द ग्रीन क्रेडिट स्कीम. सो इसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना है ना, कोई भी किसी कुछ भी पूछ सकते, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया कि थालवेक प्रिंसिपल क्या है. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो तुरंत मेरे को पूछ सकते हो कि सर वी आर नॉट गेटिंग और नॉट but getting the sense of that particular what exactly the Thalwick principle, whether we should be matlab we should learn that, what would be the useful of that, you can also ask me.
Then I will talk about the green credit system. What green credit system? उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक होगा ग्रीन क्रेडिट सिस्टम. ये ग्रीन मतलब क्या है? ग्रीन मतलब मीन्स ग्रीन एनर्जी. मीन्स व्हाट? ग्रीन एनर्जी. ग्रीन मीन्स ग्रीन एनर्जी ना. जैसे कि अभी अभी आपको पता होगा कि इसरो ऑल्सो मतलब व्हाट मुटिंग आउट टू हैव द ग्रीन व्हाट आई वुड से propellant or the fuel for the what? For the space mission. In the current system, the industry needs to compensate the loss of the forest required for their commercial activities. अब देखो, क्या आपको पता होगा कंपा है? कंपा जो अब 2016 पे आया था. कंपा दैट इज द कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स. ओके, जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के मतलब गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया था. कंपा फंड फॉर द व्हाट? एफोरेस्टेशन 2016 में आया था. कंपा फंड है ना, ये आया था 2016 में. अब देखो, लेट्स से एक इंडस्ट्री मतलब वन इंडस्ट्री इज गोइंग टू हैव और एस्टैब्लिश उनका जो कमर्शियल एक्टिविटीज वो करना चाहते हैं, और वहां पे उन्होंने क्या किया, कुछ पेड़ को स्लैश डाउन कर दिया और दे फेल डाउन द फॉरेस्ट. आउट से दे फेल्ड इट. So as they fell down the forest, they have to pay that value of the forest or the fees or the value that net worth of that forest will be. But we will have that note मतलब net worth उसका उस समय उस सारे पेड़ का वैल्यू क्या है उसको निकाल के जितना पैसा होगा ना वो कंपनी दे देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एज ए फी. The department is then responsible for the reforestation on the other patches of the land acquired by the industry. अब समझ में आ गया. तो डिपार्टमेंट क्या करेंगे? रेस्पॉन्सिबल रिफॉरेस्टेशन करेंगे. उस पैसा को लेके डिपार्टमेंट आफ्रेस्टेशन करेंगे, रिफॉरेस्टेशन करेंगे ऑन अदर पैच ऑफ द लैंड एक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या करेंगे? ये काम कर रहे हैं. जैसे कि आप सोचो कि लेट्स से आई वुड से दैट इज द बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पे एक कंपनी आया और वो बंगाल का बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में 10 एकर्स का आई वुड से 10 एकर्स लैंड ले लिया. उनको पता चला कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही मतलब यहाँ पे बाकी जमीन है नहीं, यहाँ पे कंपनी करना है 10 एकर्स का. कंपनी ने क्या किया कि इन 10 एकर्स का जो फॉरेस्ट है ना इसको उनको स्लैश डाउन करना पड़ेगा, मतलब स्लैश डाउन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा. सो दे हैव व्हाट कट डाउन, आई वुड से कट डाउन द फॉरेस्ट. नाउ दे विल एक्वायर 10 एकड़ ऑफ लैंड इन व्हाट आई वुड से मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने 10 एकड़ लैंड ले लिया, खरीद लिया. और उसी लैंड पे यहाँ पे जो 10 एकड़ का जो फॉरेस्ट उन्होंने डिप्लीट किया, काटा है, यहाँ पे पेड़ को उगाया जाएगा. कुछ पैसा फिर कंपनी पैसा दे देंगे ना यहाँ पे उगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे उगाएंगे. बस हो गया ना, ये ग्रीन क्रेडिट सिस्टम हो गया. सो अबाउट द ग्रीन क्रेडिट सिस्टम yet to be implemented allows the agencies to identify the land and begin the growing of the plants. यहाँ पे प्लांट किया जाता है. That means what I would say after the 3 years they would be eligible to be considered as the compensatory forest land. The industry feeding the forest land could then approach the agency to pay it for the parcel of such a forest land that would be then transferred into a forest department and recorded as the forest land. मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या है, अगर कंपनी ने एक फॉरेस्ट लैंड को ले लिया, वहां पे कंपनी बिठाया, तो कंपनी फिर बोलेंगे ना मेरे को और एक कहीं पे जगह दे दो, मैं खरीद लेता हूँ और उसको आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दो, फॉरेस्ट लैंड में, है ना. So if the parcel of such land, what forested land, and that would be what transferred into the forest department को दे देंगे, फिर वहां पे वो उगाएंगे फॉरेस्ट. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका बट आई वुड से ग्रीन क्रेडिट सिस्टम. इसको याद रख लेना क्योंकि आप एनवायरमेंट के जो टॉपिक होता है ना, सो इन एनवायरमेंट वी कैन हैव दैट वन इन एनवायरमेंट. ओके, एनवायरमेंट पे आप वहां पे पढ़ सकते हो, बिल्कुल दैट वुड बी यूजफुल इन द एनवायरमेंट. देन इंटीग्रेटेड स्टील हाफ. व्हाट इंटीग्रेटेड स्टील हाफ? समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो ग्रीन क्रेडिट सिस्टम मैंने बोल दिया. Next topic of the day is that integrated steel hub. Integrated steel hub. So ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. So these are the region going to have the integrated steel hub. यहाँ पे होगा. क्यों होगा? यहाँ पे रीजन क्या है सब हम देखेंगे. It aims to attract the investment nearly 70 billions in the steel sector and spur the economic growth across the eastern India as it furthers the initiative for the focus of the development in the eastern state.
मतलब इंटीग्रेटेड स्टील हब मीन्स क्या है? इंटीग्रेटेड मीन्स इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। सो यहाँ पे आयरन प्रोडक्शन होगा, उसको रिफाइंड होगा, इसका सब डिजाइन होगा, सब कुछ यहीं पे होगा। ये इंटीग्रेटेड स्टील हब यहाँ क्यों किया गया? Why it would be Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Bengal? Because these are the region of the mineral hub region of India. This is the mineral hub region of India, particularly it's heavy minerals. And Odisha is the largest producer of the iron ore, particularly it's the hematite. Okay, one of the second largest reservoir of, and Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh also. Okay, these are the state, including your Andhra Pradesh. सो यहाँ पे है ना, पूर्वोदय इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि जैसे पश्चिम डेवलप हुआ है, लेट्स से योर सूरत हो गया, तो गुजरात, बॉम्बे, गोवा हो गया, केरला हो गया, तो ये लोग डेवलप हो गया, दिस स्टेट दे हैव डेवलप्ड, पर ईस्टर्न स्टेट जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल अभी डेवलप हुआ नहीं, बिहार डेवलप हुआ नहीं, तो इनको भी डेवलप होना चाहिए ताकि जो हमारा मतलब पारिटी है ना वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज लेट्स जस्ट इमेजिन, अदरवाइज जो हमारा क्या है कि आई वुड से द डेवलपमेंट है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। सो डेवलपमेंट वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट वुड बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इट वुड बी रीजनल इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी वुड बी आल्सो इंक्रीज अगर नहीं हुआ। The eastern states are collectively hold to 80% of the country's iron ore। जब अभी मैंने जैसे कि बोला आपको, जो ईस्टर्न स्टेट है ना ये पूरा 80% ऑफ व्हाट आई वुड से 80% ऑफ द कंट्रीज आयरन ओर इनके पास होता है। मोस्ट डोमेस्टिक कोकिंग कोल रिजर्व यहीं पे है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द क्रोमाइट, उड़ीसा लार्जेस्ट वन, बॉक्साइट उड़ीसा, ओके, एंड डोलोमाइट रिजर्व यहाँ पे है। दैट मींस सब है, यहाँ पे लाइमस्टोन है, यहाँ पे बॉक्साइट है, यहाँ पे क्रोमाइट है, यहाँ पे डोलोमाइट है, यहाँ पे आयरन है। सो दीज आर द मिनरल्स इज what this region is having, these are the minerals in abundant form। in what abundant form। इसीलिए अगर सारे मिनरल्स एक जगह मिलता है ना तो क्या दिक्कत है यहाँ पे एक बट इंडस्ट्री बनाना? so there would be no problem with that। so out of 300 million tons steel capacity by 2031, रीजन विल बी कैपेबल कंट्रीब्यूटिंग 200 मिलियन टन। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है बाय 2030-31 300 मिलियन टन ऑफ द स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास होना चाहिए, इंटीग्रेटेड स्टील हब जो होगा, है ना। तो आउट ऑफ दैट 200 मिलियन टन सिर्फ बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इस रीजन पे होगा। क्यों होगा? जैसे मैंने बोल दिया आपके, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है, यहाँ पे आयरन ओर का डिपोजिशन है, यहाँ पे क्रोमाइट है, यहाँ पे बॉक्साइट है, डोलोमाइट एंड अदर लाइमस्टोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। इसीलिए I would say central government also wants to establish the integrated steel hub so that the eastern section like Bengal, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, this would be stable, develop, and regional disparity will decrease। Okay, we will try to maintain the parity and the regional discrimination को हम भी खत्म करना चाहिए, है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार होगा। then the new ports those who are coming off late would be Dhamra port which in Odisha, Paradip port, your Calcutta port, okay। so these are the ports is also here, they are the gateways of India I would say। so इन सारे जो पोर्ट है ना इनका इस्तेमाल भी ठीक से हो जाएगा और इसका बेनिफिट मिलेगा। so आपको क्या इस स्लाइड से लेना है? ईस्टर्न साइड पे इंटीग्रेटेड स्टील हब होगा। क्यों होगा? मिनरल डिपोजिशन। टारगेट क्या है? बाय 2030 इट वुड बी 300 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील एंड इंडिया मस्ट बी द स्टील हब ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, ओके, हम देखेंगे इंडिया ने 2 कोस्ट गार्ड शिप बनाया जिनका नाम है एनी बेसेंट एंड अमृत कौर। एनी बेसेंट आपको सबको पता है, हु कैन आंसर मी? एनी बेसेंट कौन थे? हु वाज एनी बेसेंट? एनीबॉडी कैन आंसर मी? एनीबॉडी कैन? those who are watching me? कौन था? what was the moment he see मतलब see I would say what led forward in India? कौन सा देश के थे वो? from which country she मतलब did belong that time? could you please answer me? Anybody?
ओके, कोई नहीं देगी। तो अनी बेसेंट यंग बंगाल मूवमेंट को उन्होंने, ये बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। सो ओके, वेरी गुड। आई वुड से व्हाट that is Sayantani Ghosh. Thank you. And what was the movement she led in India? What was the movement she led in India? Young Bengal movement. What? Young Bengal movement, ये याद रखना आप। ओके, यंग बंगाल मूवमेंट है ना। यंग बंगाल मूवमेंट वाज व्हाट, शी वाज फ्रॉम द आयरलैंड, शी वाज द सेक्रेटरी हेड ऑफ द व्हाट आई वुड से दैट इज जी। इनका जो आपको पता होगा, ये बंगालियन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट था। शी यूज्ड टू बी द टीचर, ये टीचर थे जो बंगाल में आई वुड से 1916 कांग्रेस सेशन लखनऊ में जो हुआ था, 1916 कांग्रेस सेशन, ये इनका ही कंट्रीब्यूशन था। 1916 में कांग्रेस और लीग, कांग्रेस एंड लीग, कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन सब मिल गए थे। उनके अंदर क्या कोऑपरेशन एस्टेब्लिश किया गया था। बिकॉज आपको पता होगा 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ था। The Congress got split in 1907 in the Surat session. Then it was united again in 1916 because of the effort put forward by the Annie Besant. Hope this is मतलब this is aware to the Ghosh. सत्यानी, दैट इज सायंतानी है ना, सॉरी सायंतानी है ना। आपको पता है ना, ये सारी चीज सबको पता होगा, हिस्ट्री का बैकग्राउंड भी है ना, क्योंकि नहीं तो मेरा मॉडर्न इंडिया देख लेना आप, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं मैं। ओके, सो दैट मीन्स एनी बेसेंट। और ये क्या था, दैट इज द व्हाट आई वुड से, एंड सी आल्सो वाज द व्हाट आई वुड से द चेयरपर्सन ऑफ मतलब वो भी मेरा याद नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ दो उसको। देन अदर हम देखेंगे, दैट इज द राजकुमारी अमृत कौर, द को फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, अलॉन्ग विद दैट इज मार्गारेट कॉजिन इन 1927। 1927 पे उन्होंने क्या था, को फाउंडर ऑफ द इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसलिए दोनों को नाम पे 2 कोस्ट गार्ड हो गया, ये आपको याद रखना है। ओके, सो दैट मीन्स दोनों ही है ना, सो ये आपको याद रखना है। ओके, चले हम दूसरे। So WHO designated 2020 as the year of the nurse and midwife. Okay, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। Okay, so that is WHO designated 2020 year as the year of the nurse and midwife, because आपको पता है कि COVID-19 में सिचुएशन, जो COVID-19 पैंडेमिक that struck the very heart of the world, I would say, and India as well. India was also not spare of that. And because of these people, I would say particularly the nurse and the okay, the other matlab medical staff, those who were also designated as the COVID warrior. Hope you guys also aware of that. They were designated as the what this year is dedicated for them. So honor of the what 200th birth anniversary of the Florence Nightingales. Okay, Nightingales. The World that is Health Organization designated the 2020 as the year of the nurse and midwife. This year, WHO is the focus of the nurse and the midwives in order to achieve the universal health coverage. And the organization also leading the development of the World Nursing Report is launched in the 2020. The report is the first of kind. This year is dedicated to the that is what midwifery, as well as the WHO is also the partner of the State World Midwifery Campaign. है ना, ये बहुत ही important है आपको। Then next I will also take the topic that is what Manav Thakur become the world number 1. That is what I would say international table tennis player है ना, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। That is the Indian paddler Manav Thakur become the number 1 in the latest I would say international table tennis federation ranking है ना, under 21 men's, that is the single category। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पोर्ट्स में आ जाएगा, आपका यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। So this is what the Thakur, I would say, become the 4th Indian to achieve the feat after the what Harmeet Desai, Sahiyan, that is what Sathiyan, and that is Soumyajit Ghosh, and also Soumyajit Ghosh from the Bengal. So these were the peoples, those who already achieved this feat. So Manav Thakur achieved the top spot, clinching the 121 men's singles title, IWTF Challenge Plus, that is what Benemax Vicro North America Open, कनाडा पे हुआ था।
ऑल्सो वर्ल्ड नंबर 1 है ना, ये वर्ल्ड नंबर 1 का प्लेयर है अभी, इसलिए आपको याद रखना है। देन इंडिया आई वुड से देखेंगे हम, दैट इज बट आई वुड से मलाभात पुरन स्केल अंटार्कटिका हाईएस्ट स्पीक, ये आपको बहुत ही पता है। सो दैट इज व्हाट मलाभात पुरन है ना, दैट इज द पूर्णा, आई वुड से व्हाट पूर्णा, आई वुड से पूर्णा स्केल द अंटार्कटिका हाईएस्ट पीक। ये मलाभात पूर्णा द यंगेस्ट गर्ल्स टू क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है ना, 5 years ago and accomplished another feat conquering the mount that is Vinson massive Antarctica's highest peak। ये आपको प्रीलिम पे याद रखना है 5000, ओके ऑलमोस्ट। दैट इज व्हाट माउंट विंसन मैसिव, मैसिव का मतलब हाईलैंड जो होता है ना, विंसन मैसिव, इन्होंने दैट इज व्हाट मालाभात पूर्णा आई वुड से माउंट एवरेस्ट को इन्होंने क्लेम किया है, मतलब he conquered that and also this one the Vinson massive अंटार्कटिका का हाईएस्ट, ये आपको याद रखना है प्रीलिम पे, बाकी अंटार्कटिका के आगे रखें। With this 18-year-old become the first youngest tribal woman in the world to set the foot of the 6th tallest mountain peak across the continent। मतलब सबके सारे कंटिनेंट पे जितना हाईएस्ट पीक है ना, सबको उन्होंने छू चुके हैं। So that's the great what I would say achieve for this young girl। So what she also already scaled Mount Everest Asia 14 पे, Kilimanjaro Africa Mount ये 16 पे, Elbrus 17 पे, Aconcagua 19 पे Mount Aconcagua, and what I would say Mount Carsenza Oceania 19 पे, and also now the Mount Vinson Massive Antarctica 19। Okay, so these are the what you can have prelim के लिए बहुत important कौन सा है देखें। Is it good with what anybody can okay, anybody can answer me what that is, what is and what exactly Mount Elbrus is found in which mountain? Anybody can answer me? Sayantani, could you please answer me, which is in which mountain the Mount Elbrus is located? Which mountain is located? This one. So I would say that is the what Caucasus mountain, Mount Elbrus in the what Caucasus mountain, ये अभी आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब देखते हैं बाकी सारा पढ़ाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन पे हम देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली व्हाट लॉन्च कर द यूएस स्पेस फोर्स। सो ये जो सारे था ना, ये जो टॉपिक था, एक बार मैं इसको इरेज करके दिखा देता हूँ आपको ताकि पता चल जाएगा। सो दिस वन यू कैन सी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, ये केनिया के बिल्कुल जो है ना, केनिया और आई वुड से व्हाट बॉर्डर पे है, मतलब बिल्कुल जो केनिया है उनका बॉर्डर पे है, इथोपिया बॉर्डर पे बिल्कुल है। माउंट एल्ब्रूस है, ये कॉकासस माउंटेन में है, बिल्कुल यहाँ पे है, कॉकासस बिटवीन द कास्पियन सी एंड व्हाट आई वुड से योर ब्लैक सी। देन माउंट अकांकागुआ, ये कहाँ पे है? ये एंडीज के ऊपर है, ओके, चिले में है। सो देन व्हाट देन दिस वुड बी व्हाट ओशिनिया पे है, दैट मींस इट वुड बी न्यूजीलैंड। देन आई वुड से माउंट विंसन, ये अंटार्कटिका पे है बिल्कुल। सो दिस आर द एवरेस्ट, यू नो, नेपाल पे है, इट वुड बी नेपाल। सो दिस आर व्हाट आई वुड से द डिफरेंट पिक्स आर फाउंड इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट। सो इसके बाद हम देखेंगे क्या, यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली लॉन्च यूएस स्पेस फोर्स, यूएस स्पेस फोर्स। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। United States, there is the President Donald Trump signed 2020 National Defense Authorization Act। उन्होंने 2020 National Defense Authorization Act किया है,
विद द साइनिंग ऑफ द फैक्ट यूएसए ऑथोराइज टू एस्टैब्लिश द यूएस स्पेस फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि जो स्पेस है ना, देयर इज यूनाइटेड नेशन स्पेस ट्रीटी इज देयर। सो देयर इज अ स्पेस ट्रीटी। व्हाट स्पेस ट्रीटी है, उसके हिसाब से आज व्हाट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पेस ट्रीटी के हिसाब से कि आप बट you can't, I would say what you can't place any what I would say weapon, any destructive weapon in the space because space is a global common। so आप स्पेस को हर कोई यूज कर सकते हैं बट इट वुड बी पीसफुल यूज होना चाहिए, है ना। स्पेस को बट यूज मतलब it would be space peaceful होना चाहिए। so US force space force will become the sixth branch of the armed force, है ना। space force would become the youngest and the what I would say US military branch and is the first new that is the service since the establishment of the Air Force it was 1947 US Air Force back 1947। the Space Force would be the part of the Department of the Air Force, okay। the Launch Space Force would be the funded the initial that is US dollar 40 million for its the first year and it would be Air Force led by the Air Force General that is what J. Raymond, what that is the J. Raymond, he will that is the lead the स्पेस फोर्स। तो स्पेस फोर्स का मतलब ये जो काम है ये मतलब स्पेस में कुछ भी मतलब वार वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो मतलब अटैक भी कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही मतलब आई वुड से ये बहुत ही ये बैड प्रेसिडेंट व्हाट आई वुड से बिकॉज चाइना भी कॉल कर सकते हैं, जापान भी कर सकते हैं, इंडिया भी कर सकता है ना। ये सारे कंट्री भी दैट मीन स्पेस पे वारफेयर हो सकता है। सो दैट मीन्स देयर वुड बी रन फॉर द स्पेस आई वुड से ग्राउंड से लेकर आप एयर तक चल जाए मतलब वार हो सकते हैं। तो ये काफी बैड प्रेसिडेंट है, ओके। एंड वी होप द स्पेस वुड बी बट इट वुड बी यूजफुल और ये पीसफुल होना चाहिए क्योंकि ग्लोबल कॉमन जो होता है ना 3 होते हैं। एक तो मिड सी होता है और हाई सी आई वुड से हाई सी ग्लोबल कॉमन जो होते हैं 3 होता है। हाई सी होता है एक स्पेस और 3 है अंटार्कटिका। ये तीनों इनको बोलते हैं ग्लोबल कॉमन। तो द इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी के हिसाब से यूनाइटेड नेशन स्पेस ट्रीटी के हिसाब से जो स्पेस हर कोई यूज कर सकता है, एवरीबडी इज वेलकम टू यूज द स्पेस बट दैट वुड बी पीसफुल, इट वुड बी व्हाट पीसफुल होना चाहिए। द एनुअल आई वुड से व्हाट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 ये हम देख लेंगे। एनुअल मीटिंग डावोस पे हुआ था, व्हाट इट वुड बी डावोस, ओके। So this year, the annual meeting of the World Economic Forum held in the Davos, that is the 15th annual meeting of the World Economic Forum held in Davos. The World Economic Forum, that is the WEF, the World Economic Forum is the what Swiss and the ये Switzerland में है Davos, ये याद रखना है। So non-profit foundation established in 1971 1970 based in Geneva, Switzerland। मेजर पब्लिश्ड क्या क्या करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। ये इंडेक्स ये पूछ लेते हैं इंडेक्स कौन सा इंडेक्स, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दीज आर द इंडेक्स पब्लिश्ड बाय व्हाट पब्लिश्ड बाय दैट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दैट मेक्स इंपॉर्टेंट इटसेल्फ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको काम पे आ जाएगा बिल्कुल, ओके। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो गया, आईटी हो गया, जेंडर गैप हो गया, ग्लोबल रिस्क हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया, ये सारे आ जाएगा आपको। ये भी इंपॉर्टेंस है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। देन आयरलैंड आई वुड से व्हाट इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम देख ले। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, जस्ट अ मिनट।
सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इंटरनल और इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटर अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब समझते हो आप क्या है? कमेंट करके बताओ मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या मतलब है? कोई बता सकते हैं आप? Santani, are you but what exactly, Subro? What are the meaning of the statutory body, Shantani and Subro? What is the meaning? So meaning means it is formed through the act which is made through the parliament, made by parliament. That means it is made through the parliament act. अगर अमेंडमेंट होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो जाएगा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना, ये अमेंडमेंट होने के बाद होता है ना, अदरवाइज इट वुड बी स्टैट्यूटरी बॉडी. The main function of is to build the necessary infrastructure in the inland waterway. इनका काम क्या है? inland waterway की infrastructure बढ़ाना है, surveying the economic feasibility of the new project and also carrying out admissions out of what admission regulation. इनका undertake the project development and the what maintenance of the inland water, what I would say authority. जिनका काम है infrastructure है and national waterway through the grant received from the Ministry of Shipping. सो मतलब मेरा कहना है कि जो इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया है, इनका काम क्या है कि इट्स वर्क इज टू बट फाइंड आउट द फिजिबिलिटी वेदर द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम बढ़ा सकते कि नहीं, what are the lacunas are coming, how it would be solved to the what betterment of the economic development of the country, regulation क्या होना चाहिए, कौन सा problem is being faced, all this what it would be look through it. Okay, ये सब मतलब we will also take care of this. Okay, so that is why this is important, because you know okay, that is the what I would say that is the Ganga rejuvenation plan is there. Okay, Ganga rejuvenation, you know Ganga rejuvenation plan hai. So what I would say Ganga rejuvenation, then I would say what inter connectivity of the linking of river, I would say what inter linking of river हो गया, otherwise I would say जल विकास मार्ग हो गया, ये जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट जो है ना, ये सब इनके हिसाब से कैरिड आउट होगा. Inland Water Authority of India, that will be carried out, so that what we will have a new that is the what means of transportation will develop, and we will also use the river as our transportation system. All this that would be helpful for the smooth smooth movement. Okay, that would be the smooth movement of our नेशनल वोटर डे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेलिब्रेटेड ऑन द 25th जनवरी सिंस व्हाट सेलिब्रेटेड, ये क्या कब किया जाता है? 25 जनवरी 2025. जनवरी मंथ हम तो देख रहे हैं ना, अभी 1 घंटा से जनवरी मंथ का ही पढ़ा रहा हूँ मैं करंट अफेयर. 2011 से लेके सिंस 2011 टू मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, and this was established on the 25th January 1950 पे किया गया था. The objective क्या है? To encourage, facilitate and maximize the enrollment, especially for the new voters. इनका काम क्या है? New voters को लाना है, to spread the awareness among the voter for the promoting the information participation in the election. मतलब बाकी जो नए वोटर्स है उनको क्या करना है? उनको लाना है and उनका संख्या बढ़ाना है, वोटर अवेयरनेस बढ़ाना है, and that will increase that is the vibrant of the democracy. That would be the beauty of democracy, is that participation. I would say what beauty of democracy would be the participation. The theme that is what for the that is National Voter Day is the electoral literacy for the stronger democracy. जैसे कि मैंने बोला आपको कि वोटर जितना लिटरेट होगा ना, जितना उनके पास अवेयरनेस बढ़ेगा, जितना अवेयरनेस होगा उतना पार्टिसिपेशन होगा. व्हाट आई वुड से अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन.
that will make enrich, that will what I would say, enrich our democracy. Okay, so that is why this is important. India dropped 10 रैंक्स इन डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं, जो मतलब क्या क्या डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, आप कुछ रैंक्स डिस्कस करेंगे, इंडिया का डिफरेंट रैंक्स इन द डिफरेंट सिनेरियो. So India slipped 10 place in 2019 global ranking of the what 50 to the 51st place. कहाँ पे? डेमोक्रेसी पे. The average global score scored its worst value ever, down from 5.848 in the 2018 to the 5.444, driven by the sharp regression in the Latin America and Saharan Africa, and less one in the Middle East and North America as well, region by the stagnation of the remaining regional that were covered. The report, a year of the democracy setback, population protest, was done by the Economist Intelligence Unit, the Research Analysis and the Economic Group as well. तो that means हमारे इंडिया पे जो डेमोक्रेसी रैंक है वो 10 रैंक नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, जो है ना मतलब प्रोटेस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट ग्रुप हो गया, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी हो गया, फार्मर्स भी आप देख रहे हो, है ना, or some of the laws which is passed by the government of India that might be taken into the consideration, though we would not consider it, but those who are preparing the report, they might take it into the consideration. Okay, though these are not published, I would say. Okay. Next topic I would say, but that is what, when you are coming down to the 10th place and it would be 51st place, I would say 51 प्लेस पे आप जब आ जाते हो, मतलब इनका मतलब क्या है कि ग्लोबल का जो कंट्री है ना, बाकी कंट्री आपको देख रहे हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री का डेमोक्रेसी रैंक कम हो रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका ही रैंक, इसका इंडेक्स नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, इट्स अ बैड प्रेसिडेंट इज गोइंग टू हैव. सो हमें हमारा रैंक इंप्रूव करना है, सो दैट वी विल मेक इंश्योर दैट आवर व्हाट आई वुड से दैट इज द व्हाट that is the democracy is the richest one, and we will also guide the other as well. So global talent competitive index, what global talent competitive index, ये हम देखेंगे, compiled by the INSEAD in the collaboration with the human resource firm that is the ADECO and Google. India climbed 8th place to the 72 rank in the 2020 global competitive talent index पे इंडिया का रैंक इंप्रूव हो गया, which was topped by Switzerland, USA, Singapore. इन तीनों ने टॉप किए हैं, इंडिया का प्लस 72 पे है. रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट द गैप बिटवीन हाई इनकम टैलेंट रिच नेशन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वाइडनिंग. तो मतलब क्या है कि जो हाई इनकम ग्रुप है ना, उनके टैलेंट का जो ये बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू लो इनकम, सो दैट वर्ल्ड का जो टैलेंट रिच नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो गैप है ना, वो बढ़ता जा रहा है. ओके, ये देख सकते हो आप, इंडिया रिमेन्स इन द टॉप 10 ऑफ द सेकंड ईयर इन द रो ऑफ द लेटेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. बस यहाँ पे इंडिया ने इंप्रूव किया है. और ओके, यू कैन सी नंबर 1 पे कौन है, उन्होंने अचीव कर लिया, मतलब अच्छा, किसने भी रैंक अचीव नहीं किया. ओके, सो नॉन अचीव रैंक 1 2 3, 4 पे है स्वीडन, 5th पे है यूके, 6th पे है डेनमार्क, मोरक्को है 7 पे, 8 पे है नॉर्वे, चिले है, देन इंडिया. दिस आर द 10 प्लस. India is, I would say, but continuously increasing its performance in the climate change index पे अपना जो रैंक each year improve करते जा रहे हैं. That's a good indication, I would say, good indication. ऑर्गेनिक यूटीज, ये भी हम देखेंगे. ऑर्गेनिक यूटीज का मतलब यूनाइटेड, बट आई वुड से यूटीज मतलब दैट इज द व्हाट, यूनियन टेरिटरीज. ओके, सो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक यूटीज है योर लक्षद्वीप और लक्षद्वीप, आई वुड से द एंटायर, but the group of island has been declared as the organic agriculture area under the participatory guarantor system of India. So simple, I would say, this Lakshadweep is a group of island has been declared as the organic agricultural area under the participatory system. Okay, so Lakshadweep is the first union territory to become the 100%
organic as well as farming is carried without use of synthetic fertilizer and pesticide. कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई फर्टिलाइजर सिंथेटिक्स नहीं है, ये नेचुरल पेस्टिसाइड. इसका मतलब नहीं है कि दे आर नॉट यूजिंग द पेस्टिसाइड और द फर्टिलाइजर. यस, दे आर यूजिंग द compost, they are using the organic fertilizer or the organic compost in but by replacing the synthetic one. Okay, and pesticide, these are the things. So what this would be the what fast UTs, that is the organic UTs. लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा बता दूं मैं. So this is located in the Arabian Sea, western coast of India. Muslim majority UTs यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं जो गवर्न करते हैं. स्पेशल IAS होता है, वो IAS ऑफिसर होता है एडमिनिस्ट्रेटर. कमिंग अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट, दैट इज द कोचीन हाई कोर्ट के अंडर आते हैं जुरिडिक्शन इनका. एंड आई वुड से दे आर मतलब स्टिल नाउ नो कोविड रिपोर्ट फ्रॉम द आइलैंड, सो दैट इज सेफ. And is the atoll island, I would say what a atoll island, this is atoll island, that is and what I would say coral atoll type of island. Okay, and यहाँ पे बहुत दिखता है जो फॉरेस्ट है ना, स्पेशली से कोकोनट बहुत दिखता है यहाँ पे. Okay, and having no forest area, having I would say no forest area, but forest cover 89% है. फॉरेस्ट कवर 89%, फॉरेस्ट एरिया नहीं है. तो ये था लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपके लिए. फिर हम देखेंगे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020. ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020. फ्रीडम इंडेक्स का मतलब क्या है? जहाँ पे आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन स्पीक आउट ऑल दिस थिंग्स ऑफ द फ्रीडम इंडेक्स पे ये मिल जाता है. ओके, सो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स फॉर द 2020 इज रिलीज रिसेंटली. इंडिया प्लेस 111 स्पॉट आउट ऑफ 161. ये भी आपको प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बट आई वुड से इंडिया इज रैंक इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पे 100 रैंक पे है. देन इंडिया रैंक्ड 94 इंडेक्स इन व्हाट आई वुड से 19 पे, और अब हो गया इसका 11. दैट मीन्स यहाँ पे भी ये रिलीज हुआ रिसेंटली. आप देखते हैं मतलब आप क्या हो रहा है, नीचे आ गया इंडिया दैट मीन्स फ्रीडम इंडेक्स पे, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट वगैरह ये जो हो रहा है, इसलिए. पब्लिश्ड बाय अमेरिकन थिंक टैंक्स, ओके, दैट इज कैटो इंस्टीट्यूट एंड द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा. ये हो गया. सो इंडिया का स्कोर देखो 6.30 आउट ऑफ 10. पर्सनल फ्रीडम के में इकोनॉमिक फ्रीडम पे भी कम है. मतलब सर ओवरऑल ह्यूमन फ्रीडम स्कोर है सबसे आगे है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, है ना, इन तीनों आगे हैं. दैट इज द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पे, एंड इंडिया इज 111 आउट ऑफ 162. देन सो इंडिया के ये देखेंगे हम, व्हाट आई वुड से इंडिया गोज डाउन 1 रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. 131 पे आ गया, है ना, आउट ऑफ 189 कंट्रीज से नीचे आ गया. आप देखते हो, है ना. सो दैट मीन्स व्हाट इट वुड बी 2019 वैल्यू के बेसिस से. आप 2018 पे ये 30 था, देन 2019 पे 29 था, अब फिर 30 हो गया, 31 हो गया. So that means India also decrease in the place of what SDI पे UNDP, जैसे कि what United Nations Development Program है, UNDP इसको प्रोपलिस करते हैं, Human Development Index रिलीज होता है. It would be 131. What 131 रैंक क्या है? SDI रैंक इंडिया का प्रेजेंटली 131 आउट ऑफ 189. और ये वाला भी आपको इंडेक्स, ये वाला भी याद रखना है, इसमें क्या है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पे, दैट वुड बी what it would be 111 आउट ऑफ 162. ये भी आपको याद रखना है ना. यहाँ पे है 111 इंडिया का प्लेस इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आउट ऑफ 162. सो ये याद रखना है आपको. बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि इंडिया रैंक 130 इन 18 पे तक हुआ था, अब 131 है हो गया 2020 पे. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्स द नेशन हेल्थ. कौन सा पैरामीटर पे? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आई वुड से व्हाट द पैरामीटर्स दैट इज opted out for the measuring the human development index. So the SDA is the what? Health, standard of living and education. These are the parameters over which measure किया जाता है. Purchasing power parity, that is the PPP, is the measure of the price of the what. ये भी इसको भी लिया जाता है consideration, taken into the consideration. PPP यार इंडिया का काम हो गया. India ranked what I would say next. India ranked 50 nation in the what global innovation index. Global innovation index पे 2020 पे इंडिया का रैंक क्या है? 50. In the global what innovation index, India rank is what? 50. India rank is 50.
And New Delhi, India climbed 4th spot on the Global Innovation Index. The 2020 is now 48th position in the top list of the 50 innovation countries. The World Intellectual Property Organization annually ranking इसको देता है. That means I would say what India is having. So that is what 50. So in top 50 nation in the Global Innovation Index, बहुत ही बढ़िया है. It would be what 48. The 48th position. Okay. पोजीशन क्या है इंडिया का 48. कौन देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ओके ये हो गया. आप देखेंगे इंडिया 140th रैंक पे ग्लोबल दैट इज द व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020. सो 40 आउट ऑफ 53 कंट्रीज हो गए. सो इंडिया रैंक्ड 40 आउट ऑफ व्हाट 53 द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स पे हो गया 40 और ये हो गया आपका जो इनोवेशन पे हो गया व्हाट 48. ओके एंड 31 हो गया. देन आपका हो गया 111 हो गया. ह्यूमन फ्रीडम्स इंडेक्स हो गया. और ये था इंडिया का मतलब टॉप 10 है इंडिया जो क्लाइमेट चेंज के लिए है ना. तो इन सारे इंडेक्स को आपको याद रखना है ना. सारे इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर. ओके कंजर्वेशन ऑफ टाइगर ये भी न्यूज पे था. ओके सो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर हम देखेंगे. So the conference organized by the National Tiger Conservation Authority, Global Tiger Forum, representative form of the group of the countries signed by the to double the tiger population by number 2020. 2022 के मतलब जो टारगेट है ना कि we will what double the tiger population by 2022. इसका टाइगर पॉपुलेशन का जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ग्लोबल टाइगर जो ग्लोबल टाइगर जो फोरम है ना उनका आई वुड से व्हाट जो सेंट पीटर्सबर्ग हुआ था दैट इज द व्हाट T2 जो ये जो कंसेप्ट आया था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया. यहाँ पे ये कंसेप्ट आया था कि T2 मतलब टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है बाय 2022 है ना. यहाँ से कंसेप्ट आया था. Or have the global expert official government of suggest that the India must prepare for the new challenge of that is the reaching of the limit of the management capacity. इंडिया के पास बहुत मतलब ठीक ठाक है. इंडिया is growing fast as the habitat shrink country is nearing its capacity manage the tiger के लिए हमारे पास तो एरिया कम होता जा रहा है. इन अदर वर्ड्स इंडिया कांट हैंडल मोर बिग कैट क्योंकि हमारे पास जो एरिया है ना वो कम होता जा रहा है. ऑफिशियली हमारे पास कितना है 2226 टाइगर्स है. इन 14 पे है ऑनगोइंग सेंसस एक्सपेक्टेड टू रिवील और यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है. ओके सो दैट मीन्स अगेन आई वुड से मध्य प्रदेश कर्नाटका दे आर द लीडिंग. प्रोजेक्ट गौशाला. सो ये भी अब देख सर गौशाला किसने कहा था. एंड विद द प्रोजेक्ट गौशाला इज द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है. सेट अप 1000 गौशाला और cow shelter in the state in the next 4 months to accommodate around the 1 lakh stray cows and their that is the progeny. So setting up the Gosala in the every village panchayat was a key promise made by the Congress in the manifesto for the 2018 assembly election है ना. तो इसलिए इनको आप किया जा रहा है. So this would be the announcement of the government expected not only to tackle the stray cattle's menace but also to create 40 lakhs man days employment. What I would say man days मतलब हर दिन मतलब 40 लाख से ज्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. बहुत बढ़िया. यहाँ से फिर मिल्क वगैरह भी आ जाएगा. मिल्क है ना ये सब. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव द व्हाट बेनिफिट एंड बेनिफिट. लॉस कुछ भी नहीं है यहाँ पे है कि नहीं. समझ में आ रहा है सबको. कोई तो दिक्कत नहीं है. So Department of Rural Development would be the project nodal agency. कौन होगा Department of Rural Development. The project would be implemented by the ग्राम पंचायत इनको implement करेंगे. Self help group. Okay.
self-help group and the state board for the conservation of the bovine animals. Okay, so that would be done. But that means the rural development जो authority इनका नोडल एजेंसी होगी, इनके देखभाल यही करेंगे. प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, that is the PM किसान scheme. I would say PM किसान scheme, इसको भी हम देख लेंगे. PM किसान scheme to aim the what extent of the direct income support to the what I would say 6,000 per year for the families having cultivation land up to 2 hectare. 2 हेक्टर के मतलब जो लैंड जिनके पास है और उससे कम हो रहा है उनको दिया जाएगा 6,000 साल में दिया जाएगा. This would be income support to be transferred directly to the bank account. It would be what direct transport, what I would say benefit, that is DTP. It would be direct transfer benefit हो जाएगा. Farmers के लिए it would be, but it would be what I would say 3 equal installment of the 2,000 each time. So these 3 what in each 4 months it would be, but is let's say first quarter आपको मिल गया 2,000, फर्स्ट क्वार्टर में मिल गया 2,000, फर्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में मिल गया 2,000. दैट मींस इट वुड बी 6,000 हो गया बस. 3 क्वार्टर में मिल गया आपको अराउंड 12. now what that is 12 crore small and marginal farmers of the families are expected to benefit. मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से बेनिफिट होंगे. इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारा टारगेट में क्या है कि 2022 में क्या करना है, फार्मर इनकम को डबल करना है. ये भी तो एक टारगेट है ना गवर्नमेंट का. ओके, these programs would be also funded by the government of India. This program would be entitled the annual expenditure, that is what 75,000 crore. 75,000 crore. Okay, the PM Kisan should that is the pave the way for the farmers to learn and live the respectable life as well, है ना. इसका वो क्या होगा, जो PM किसान है ना, that is the PM Kisan सम्मान निधि. ये what would be the benefit is that the benefit would be simple. You have to, as this is the 12 crore small and the marginal farmer है, ये लोग benefit पाएंगे. They would be getting benefit of the scheme. उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट है. गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, टारगेट है कि गवर्नमेंट wants to increase the farmer that is the income by the 2022 और 2022 it would be double किया जाएगा. और जो डिस्ट्रेस है फार्मर का वो भी थोड़ा रिलीज हो जाएगा, है ना. ईच क्वार्टर में 2,000 मिल जाएगा. तो प्रोग्राम के हिसाब से मतलब 75,000 करोड़ पैसा खर्च होगा, मतलब एनुअली एक्सपेंडिचर होगा. पीएम किसान शुड पेव द वे फॉर द फार्मर्स टू ऑन द लाइफ इन द रेस्पेक्टेबल. इनके पास पैसा होगा और ये खुशी से जी भी सकते हैं. सो नेक्स्ट जस्ट अ मिनट. Next, I will talk about 24. So next, I would say the Reno without border. What Reno without borders? So it would be what that means. I would say Reno without border means Reno. You know, okay, India is having the Reno. The highest number of Reno is found in what Assam. But either it would be Kaziranga National Park. This is also famous for the what Reno population. Apart from that, Reno tiger, elephants, these are the things वो fall वगैरह भी यहाँ पे मिलता है. काजीरंगा नेशनल पार्क which was also flooded out, flooded भी हुआ था 2020 का जो इनिशियली जनवरी था ना, वहाँ पे ये फ्लडेड हुआ था. सो इंटरनेशनल बाउंड्रीज वुड नॉट कम द वे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रीनो. क्योंकि आपको पता होगा मानस जो है ना, मानस नेशनल पार्क ये बिल्कुल बॉर्डर पे है हमारा जो भूटान है और आई वुड से इंडिया. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ना, सो यहाँ पे आई वुड से कि I would say there what the Reno also cross to that their side, that is the Nepal side और भूटान side को जा सकता है. तो that means so उनके पास क्या है ना, वो तो मूवमेंट करते रहते हैं, इस साइड उस साइड जाते रहते हैं. उनका what I would say their conservation उनका होना चाहिए और उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए. ओके, सो द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था. ये बहुत ही बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आई वुड से व्हेन यू आर राइटिंग दैट इज द व्हाट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन लिख रहे हो, एनवायरनमेंट को कुछ भी एक टॉपिक लिख रहे हो ना, तो आप इस सारे टॉपिक को वहाँ पे ऐड कर सकते हो. सो व्हाट दैट इज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड मीटिंग हुआ था कि एशियन रीनो रेंज कंट्रीज को लेकर जिन जिन कंट्रीज में रीनो मिलता है.
Experts have noted that this transboundary collaboration is needed between India and Nepal and Bhutan for the conservation and the protecting of the greater 100 rhino. जैसे कि 100 rhino मिलता है इंडिया में. There are no rhino in Bhutan, but some of them, Manas National Park joining Assam Baksa Reserve in Bengals, are known to have the cross occasionally. जैसे कि आपको बताया भूटान पे rhino नहीं है, rhino found in India, but they cross from the Baksa Tiger Reserve हो गया. And as I said, I was also talking about a few minutes ago, but that is the मानस नेशनल पार्क. तो यहाँ से उस साइड चले जाते हैं और वहाँ पे पोचिंग भी हो जाता है, कभी कभी लोग उनको मार देते हैं. तो हमारा टारगेट है कि उनका पोचिंग वहाँ पे ना हो. ओके, पोचिंग ना हो एंड देयर पॉपुलेशन वुड बी कंजर्व्ड. ओके, प्रधानमंत्री श्रम योगी, दैट इज व्हाट मनधन योजना. प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना मतलब ये भी एक बहुत बड़ा स्कीम है. प्रधानमंत्री सम्मान कृषि सम्मान निधि स्कीम हमने देख लिया. अब हमारा न्यू टॉपिक है आज का, क्या है? सो से प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना. बट श्रम योगी मनधन योजना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसको भी हम देख लेते हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द प्रधानमंत्री श्रम योगी, दैट इज व्हाट श्रम योगी मनधन योजना. सो नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द व्हाट वर्कर एंड द लेबर of the what or unorganized sector. That means what I would say the Prime Minister launched the what, that is the Pradhan Mantri Shram Yogi what Mandhan Yojana, the national pension scheme hai for the worker of the labor of the unorganized sector, announced in the interim budget in the February last year. The monthly pension दिया गया 3,000 to the employee in the what or unorganized sectors after the 60 years. 60 साल जब हो जाएगा आपको पेंशन मिल जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलता है और गवर्नमेंट जॉब होल्डर को. PM also distribute PM Shram Yogi pension card to the selected beneficiaries. Said that would be the first time in the independence the what workers of the unorganized sector would be entitled and the monthly pension इनको मिल जाएगा. बहुत ही it will promote the inclusive society. I would say what inclusive society and democracy at its best. I would say okay, that would be the things would be done. Then next हम देखेंगे निफा वायरस, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ. The project could be implemented by the one Gram Panchayat could implement self-help group. Okay. सो नीफा वायरस फिर हम देखेंगे. आज का नेक्स्ट टॉपिक यह है कि नीफा वायरस. ओके, नीफा वायरस अलर्ट इन त्रिपुरा. त्रिपुरा पे नीफा वायरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कुछ वायरस आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो की पॉइंट नीफा वायरस देखेंगे. गवर्नमेंट साउंडेड अन अलर्ट after the death of the 5 members of a family. Nipah virus attacked the Bangladesh village bordering the West Bengal. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल से जो ओके इसलिए ये त्रिपुरा भी अलर्ट किया गया था. की पॉइंट क्या है? निफा वायरस इमर्जिंग द इन्फेक्शन डिजीज है दैट ब्रोक आउट इन द मलेशिया. सिंगापुर 1980s पे 90s पे हुआ था और अब मतलब आई वुड से इन 2017-18 इट वाज आल्सो इन केरला पे भी देखा गया था. फर्स्ट हाफ इन द डोमेस्टिक पिग्स से ट्रांसफर हुआ ह्यूमन बीइंग को, देन ये गोट पे, डॉग्स पे, हॉर्सेस वगैरह, सीप वगैरह सब पे दिखता है. इन्फेक्शन ऑल्सो कॉजेस द व्हाट ह्यूमन बीइंग का डेथ भी हो सकता है. The organism which caused the Nipah virus, that is in facilities, are the RNA or that is what ribonucleic acid virus. That is the ribonucleic acid virus. इन्होंने बहुत ही खतरनाक है. और निफा वायरस जो कि केरला पे भी आया था. What I would say केरला 20 it was 2019. I would say 2019-2018 ये केरला पे भी. So it was spotted out there.
तो निपा वायरस के बारे में हमने देख लिया कि ये एक वायरस डिजीज है इन्फेक्टेड बाय थ्रू द व्हाट दैट इज रिबोन्यूक्लियस एसिड वायरस. इनका मतलब इन द वायरस कॉजेस द डिजीज. ओके, नेक्स्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इनको भी हम देख लेंगे. ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, सो ये क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब आपका क्विक रिवीजन होगा. जिन लोगों ने सोचता होगा कि क्या मतलब पढ़े, कोई पढ़ने का जरूरत है नहीं, हम खुद पढ़ लेंगे, है ना. एंड आई स्वेयर के जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, वो कर नहीं पाएंगे. अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया है बात है. ऐसे नहीं कि हर कोई नहीं कर पाता, कुछ लोग कर लेते, वो जीनियस है ना. So global environment outlook देखेंगे. According to the global, that is the environment outlook prepared by the United Nations Environment Program. बहुत ही important है. United Nations Environment Program prepares what that prepares that is the global environment outlook को prepares करते हैं. Okay, and the what I would say unless environment protections were drastically scaled off, cities region of Asia, Middle East Asia, Africa, ये सब what millions of the premature death होता है each year. That means unless environment protections were drastically scaled up, अगर हम environment protection के लिए काम नहीं करेंगे, cities in the region of the Asia, Middle East Asia, Africa, ये सब खत्म हो जाएगा. Okay. So India could save what I would say 3 trillion in the healthcare cost if they implemented policy initially. Consistent Paris climate agreement goal को अगर हम अचीव कर ले तो हम भी बहुत सारे पैसा हम भी बचा सकते हैं. We would be also able to achieve and we would be also able to what that is the save at least 3 trillion healthcare वो भी हम बचा सकते हैं. In other words, ensuring that the what globe don't heat up beyond the 1.5 degrees Celsius after the what turn of the century. हमारा जब मतलब 21 हो जाए, जैसे कि अब 25th सेंचुरी हम चल रहे थे, जैसे 20 मतलब 2021 साल हो जाएगा ना, तब ऐसा नहीं होना चाहिए. So in other words, I will talk about the ensuring the globe don't heat beyond the 1.5 degrees Celsius. Okay, ये भी आपको हमें ध्यान पर रखना है. Then 6th edition of the environmental global outlook, इसको देख लेंगे. Okay, it's cold out here. So global environment outlook, that is the what released by the United Nations Environment Program, बहुत important है, पूछ सकते हैं. Is that what was initiated in response to the environment reporting requirement UN Agenda 21. कब आया था? अर्थ समिट पे आया था. It was held in the Rio de Janeiro अर्थ समिट पे हुआ था. That's why important. Okay, so that is the Agenda 21 means what 21 in the Agenda 21 refers to the 21st century. Sorry. So that means it's a what Agenda 21 is non-binding action plan of United Nations regarding the sustainable development. It's a
what I would say, product of the Earth Summit, which is held in the Rio de Janeiro in 1992, Agenda 21. मतलब क्या है कि हमारा जो एजेंडा होना चाहिए कि 21st सेंचुरी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द व्हाट क्लाइमेट चेंज से. देन वेस्ट नाइल वायरस, ये भी इम्पोर्टेंट है. वेस्ट नाइल वायरस है ना, ये जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस है, अभी नीफा वायरस देखे थे. फिर वी विल टॉक अबाउट द वेस्ट नाइल वायरस. दिस इज ऑल्सो फीवर. वेस्ट नाइल वायरस इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है. ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है. इट्स मोस्टली रिपोर्टेड इन द व्हाट कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट पे कॉन्टिनेंटल पार्ट देखते हैं. as the media 7-year-old of the that is Mavlapuram district of the Kerala suffering from the West Nile virus, or the fever, I would say fever exactly, spreaded by the 2x mosquitoes, and the infection could be confirmed only by the second sample test positive होगा. so the symptoms क्या होना चाहिए, हेडेक यहाँ पे होगा, then tiredness, it could be tiredness होगा, बॉडी पे बहुत ही ज्यादा पेन होगा, vomiting होगा occasionally, and with the skin rashes might be there, and body would be swollen and फूला भी देखिएगा body. World Health Organization says West Nile virus is transmitted from human through the bites and from the infected mosquitoes. Mosquitoes become the infected then, and they feed the infected birds as well. So I would say what simple. So these are the virus is transmitted from the mosquitoes to the human being as well. Okay. So Syria goes to take the back गोलान हाइट्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गोलान हाइट्स कहाँ पे है, ये मैप पे आप ड्रॉ करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. सिंपल सा गोलान हाइट्स. This is your Mediterranean Sea. Here would be what? Red Sea. Okay. Just a minute. ये इटली हो गया आपका. Here would be what I would say. This is Red Sea. ये Mediterranean Sea. यहाँ अफ्रीका है दिस साइड. ये यूरोप है और ये अरब. सो यहाँ पे गोलान हाइट बिल्कुल यहाँ पे है. यहाँ पे सीरिया है. व्हाट आई वुड से सीरिया. ओके. और इजराइल, यहाँ पे इजराइल है. इस साइड इजिप्ट है. ओके. तो इजराइल ने क्या किया, जब अरब वार हुआ था उस समय, ड्यूरिंग द अरब वार इजराइल ऑक्युपाइड द गोलान हाइट. और ये यूपीएससी 2 बार पूछ चुके हैं. यूपीएससी has twice I would say. So Israel occupied Golan Heights. Its allies army like condemned US. That means like condemned US President Donald Trump for the removing recognized Israel's sovereignty over the territory seized in war. सीरिया गवर्नमेंट ने किया है कि हम लोग क्या करेंगे कि they will take back, that is the Golan Heights, which was captured and it was taken by what I would say Israel in the war of war during the war. The enemies like the condemned US president को condemn किया क्योंकि उन्होंने recognize कर दिया कि Israel sovereignty over the territory is war. So that means according to the war ethics क्या कहते हैं कि war ethics कहते हैं कि if you have captured any territory during the war, that must be returned back. So Trump's statement marked a drastic drift in the US's policy over the status of the disputed area that Israel captured the Syria in 1967 conflict and annexed 1981, a move not recognized internationally. So that means I would say कि Syria during the Arab war जब हुआ था उस समय, but Israel occupied the Syria, some part of the Syria, some parts of the Jordan, some parts of the Egypt, like your Sinai Peninsula, which is now left to the Israel को अब दे दिया, Israel ने दे दिया इजिप्ट को. So मतलब चाहे ये जॉर्डन हो गया, चाहे ये बट आई वुड से आपका जो सीरिया हो गया, इजिप्ट हो, इन सबका जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया था इजराइल ने, और थोड़े थोड़े सबका एरिया लिया और खुद को वो सब अपने साथ एनेक्स कर लिया था. इजराइल considered the area which was captured during the war. I would say it was the 1970s में जो हुआ था, 60s में जो हुआ था, 67 से लेके 69. Okay,
उस समय जो हुआ था उनको मतलब इंटरनेशनली उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि दैट टेरिटरी इज गोना टू बी द पार्ट और गोइंग टू बी द पार्ट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इजराइल, बट दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये ना एक तो यूएसए ने बोल दिया कि हाँ भाई जो भी एरिया उन्होंने ले लिया था उस समय वार पे, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द इजराइल, बट दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड एज वेल। So it must be at least 30% of the 20% of the world nation ये recognize करना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये तो bad भी होगा ना, मतलब it would be a bad precedent, is not it? Because that means the powerful country they would also what capture the small territory and of the small country, so that would be a bad precedent. So hope such kind of statement would not be, the country would refrain and to making this such kind of statement, I would say. एंड व्हाट आफ्टर द वार एथिक्स के टेरिटरी हम दे देंगे। PSLV C45 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे क्या है। So PSLV C45 mission that is the what scheduled to lift off from the Sriharikota on the 1st of April would be memorable one of for the what Indian Space Research ISRO। So मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट है? PSLV C जो 45 है ना, will mark the 47 flight of the PSLV। PSLV का 47 फ्लाइट होगा ये। What it would be 47 फ्लाइट for the PSLV। PSLV के लिए 47 फ्लाइट होगा, है ना। सो मतलब क्या है 47 से मतलब दो जो कि सक्सेसफुल हुआ नहीं। सो इट विल बी इसरोज फर्स्ट अटेम्प्ट ए रिप्लेसिंग पेलोड इन 3 डिफरेंट ऑर्बिट, मतलब एक साथ 3 ऑर्बिट पे उन्होंने प्लेस करेंगे। सो दैट मीन्स PSLV दैट इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंडिया का है, और एक GSLV है ना, दैट इज द जियोसिंक्रोनस है ना। सो 436 kg ऑफ एमीसैट 749 किलोमीटर ऑर्बिट द एमीसैट मतलब लो ऑर्बिट पे होगा। चीप पेलोड C45 होगा, बट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द इसरो। जो एमीसैट होगा इनका काम क्या होगा ये बहुत याद है, मतलब याद रखना पड़ेगा आपको, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स गोइंग टू व्हाट आई वुड से मेजर द दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ओके देन इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम देखेंगे अप टू बाय 5% कम मतलब बढ़ गया। सो ये एमिशन के ऊपर आप याद रख लेना, से 45 से लॉन्च किया गया था। दैट विल मेजर द दैट इज व्हाट इट विल मेजर द मेजरमेंट क्या करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ गया है हमारा 5%। ओके So according to the report, Paris-based International Energy Agency International Energy Agency ने बोले हैं कि इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है एमिशन हैज ग्रोन as faster as than the any other major what energy consumption nation। सबसे ज्यादा है emitted 2,299 million tons of the carbon dioxide in 2018 and 4.8 rise किया है previously। The India's emission growth was higher than the United States and China and the 2 biggest emitter of the world, but despite the growth per capita emission India is remain low, only 40% of the global average report says। So emission from the India contributes 7% of the global CO2, बहुत ही कम I would say, 7% in 2018 which was मतलब as compared to USA 14%। आप देख सकते हैं US का 14% है टोटल कार्बन प्रोडक्शन जो शेयर होता है यूएस करता है कितना 14%, इंडिया कितना है 7%। दैट मींस हाफ आई वुड से व्हाट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। सो इंडिया इज मतलब डूइंग वेल आई वुड से, बट डूइंग वेल। देन द इंडिया's higher CO2 emission have been what spurred by the increasing of the consumption of the fossil fuel, is not it? The fossil fuel का जब consumption बढ़ रहा है मीन्स क्या होगा, क्या I would say what I would say that means the carbon dioxide का जो production और the I would say the total production of the carbon dioxide का by production ये तो बढ़ जाएगा। That means I would say what ये आपको याद रखना है कि 7 the total carbon produced is being produced by India is the only but 7%। जब यूएसए कितना कर रहे हैं यूएसए कर रहे हैं 14% कर रहे हैं, यूएसए इज द 14%, है ना। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। देन व्हाट शाहीन XI इनको हम देख रहे इज अ जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज विद चाइना एंड पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो फ्रेंड है, परपेचुअल फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड।
China and Pakistan, I would say, two all-weather friends. China differs, that is what I would say defended that is Sahin XI exercise with Pakistan Air Force as the routine engagement with export beliefs is reflective of larger strategic posture towards the India. It being held in Pakistan's southern Sindh province near the India border. ना southern Sindh province भी हुआ था India border के बगल में, that means जो desert वाला area है उस side हुआ था. So India recently hosted the Malabar exercise, naval exercise with the USA, Japan and Australia, which was stormed as the Chinese state media as an illegal intentioned attempt to corner the China. कि ये जानबूझ के किया जाए चाइना को कॉर्नर करने के लिए मीडिया ना, that is what ill intentioned attempt to corner the China. इन चाइना ने इसको ब्लेम किया कि भाई ये जो कर रही है ये हमारे खिलाफ है. This is not good. You guys are planning, मतलब doing something which would be harm the interest of China as well. So ये सारे हमें वहाँ पे देखने मिलता है. Okay. देन सोक और वेटलैंड, इसको हम देखें. सोक और वेटलैंड ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है. और आपको बता दूं कि जो क्वाड का मेंबर भी ये सब है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, ये सब भी क्वाड का मेंबर है. These are also the Quad member countries. So अब हम देखें सोक और वेटलैंड लद्दाख पे है, कहाँ पे है. इंडिया हैज एडेड सोक और वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इनटू द लद्दाख पे, जैसे कि 42nd रामसर साइट है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल बी द 42nd रामसर साइट इंडिया का है. सेकेंड यूटीज ऑफ लद्दाख के दूसरा वाला है सोक और बेसिन. ये हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल वाटर बॉडीज, दैट इज व्हाट स्टार्ट सपूको सो freshwater lake and the Sokor itself, a hydrosaline lake situated in the that is Changthang region of Ladakh Bay, is called as the Sokor, meaning white lake. What white lake? Because of the white salt that efflorescent found in the margin due to the evaporation of the highly saline water. जब water saline हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, शोर पे मतलब जो किनारा पे ना पूरा सॉल्ट डिपॉजिट होकर रहता है, इसलिए इसको व्हाइट लेक भी क्या जाता है, सोकर लेक लद्दाख भी मिलता है. तो सोकर बेसिन इज व्हाट ए वन कैटेगरी ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड. सो दैट इज द इंटरनेशनल आई वुड से बर्ड्स एसोसिएशन as per the Life International and the key engaging site of the Central Asia flyway. सेंट्रल एशिया जो फ्लाईवे फास्ट है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट लेते हैं. द साइट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, that is the breeding areas of the black-necked crane, that is what goose, that is what nigricolis in India, है ना. तो that is the black-necked crane जो होता है ना, इनका वो होता है, क्या होता है एरिया जाके हुआ था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीडिंग जोन है ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए, जो आई वुड से द बर्ड्स, है ना. ये भी बहुत बड़ा इंपोर्टेंट चीज है. देन रामसर कन्वेंशन, नेक्स्ट हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन. ओके, so let me erase all this. Then next slide would be the day of Ramsar Convention. So Ramsar is a city of in the Iran. I would say it's a city of Iran. It was the treaty was signed for the conservation of the wetland around the world. So like this one, as I said, the 42nd wetland of India, the Sok or wetland of Ladakh, which also the listed into the Ramsar site. Ramsar Convention कब हुआ था? 22nd February 1971 हुआ था. तो जैसे कि रामसर सिटी ऑफ द ईरान के ईस्टर्न ईरान सिटी है, एक oldest intercontinental accords signed by the member countries. Objective क्या है? To preservation of the ecological character of the wetland, international importance. जो सारे wetland है जिनका international importance है उनको रखा जाए. The name of the Ramsar city of Iranian city. Okay, treaty was signed. The place chosen for the conservation under the given tag, that is the Ramsar site. Ramsar site जैसे कि चिल्का है आपका, I would say भितरकनिका वगैरह जो इम्पोर्टेंस रीजन है, भितरकनिका हो गया, और ये केला दिखाना सरपा हो गया, मणिपुर लेक, लुकतोक लेक हो गया, ऑस्टोमुड़ी लेक हो गया, और आई वुड से उलूर लेक हो गया, है ना. द ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया हो गया, द पुलिकाट लेक हो गया, कोलुरू लेक हो गया. ये जो लोग है ना, देन
I would say what that is the bill, that is the Dipur bill वगैरह जो है, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, ईस्ट कलकत्ता भी है, ईस्टलैंड, ओके, कलकत्ता वेटलैंड, ये सब वेटलैंड को क्या किया गया, these are the wetlands is what I would say wetland, these are the wetlands is also given importance to develop the what maintain an international network of the wetland which are important for the what conservation of the global biological diversity and for the sustainable human life through the what maintenance of the ecosystem component and possesses the benefit as well. So the next topic of the day is that I would say what the fast FASTag, okay, ये इसको बस आप हटा दीजिए, इसको ये को हटा दीजिए, FASTag मैंडेटरी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ आई वुड से व्हाट जनवरी 2021, मतलब कल से हो जाएगा, आज जैसे कि क्लास ले रहे हैं हम, तो कल से मैंडेटरी हो जाएगा जितना भी फोर व्हीलर है, व्हाट फोर व्हीलर सब के सब FASTag होना चाहिए, announced by the what FASTag is being the mandatory for the what all the vehicles, I would say from the what first of 2021. Okay, would be enforced in the 1st of January 2021. Ministry of Road and Transport Higher Authority ने उन्होंने बोल दिया, आपको पता है नितिन गडकरी जी है उधर, है ना, तो उन्होंने इसको दे दिया. FASTag के ऊपर थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, FASTag का काम क्या है, little bit I will talk about the FASTag, what exactly the work is done. ओके, सो FASTag के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, FASTag क्या है. सो दिस इज टोल कलेक्शन सिस्टम है, ये क्या है, टोल कलेक्शन सिस्टम डिजिटल है ये, दिस वुड बी अ डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम, ओके, डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम FASTag, जो कि रेडियो वेव्स यूज करता है, आई वुड से व्हाट सॉरी इंफ्रारेड्स व्हाट यूज करता है ना, that is the webs, and it will have a scanning system. Let's say the vehicles is like this, let's say suppose this one is a vehicle, the vehicle is being running and here would be there would be the door of driver steering, यहाँ पे होता है ड्राइवर बैठता है, this is the front side, let's say this would be the front side of the truck, okay, and the vehicle is running like this, okay, so here would be a what in the door of the driver, जहाँ पे बैठता है ना, यहाँ पे डोर पे एक FASTag का क्या होना चाहिए, जो स्क्रीनिंग होना चाहिए,
तो ये अपने आप स्क्रीन हो जाएगा when the truck passes through the what I would say the toll gate. When the truck passes through the toll gate, it would be screened automatically, automatically get screened, and the money would be automatically deducted from the account, so that the FASTag will ensure that is the what I would say seamless movement. The movement would be seamless movement and less congestion. I would say what congestion भी कम होगा, और pollution जो होता है ना, ये pollution भी कम हो जाएगा, congestion कम होगा, pollution कम होगा, movement fast movement होगा, movement भी क्या होगा, ये movement fast हो जाएगा, and collection be easy होगा, and it would be collection would be more easy, so that that is why कि total revenue collection भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपनी ऐप कर and okay, so it would be prepaid है, ये जो फास्टैग का अकाउंट होगा ना, ये प्रीपेड है, तो यहाँ पे प्रीपेड पे आप रिचार्ज करके रख सकते हो, है ना, the FASTag, so that would be happening and comes from the F that is the from tomorrow itself. Okay, so just hold 2 minutes. Hold 2 minutes. I'm coming back. So next topic of the day is that we will talk about what अंटार्कटिका. सो अंटार्कटिका ये न्यूज़ पे है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी कोविड रिपोर्टेड है. सो आई वुड से व्हाट COVID-19 also got reported from this place, Antarctica. आपको फिर आप बोलेंगे कि from why exactly Antarctica, how does it would be reported from the Antarctica? Okay, those peoples are there for the what resource they're getting reported to be tested. So 2 Indian permanent stations in Antarctica, it would be Maitri and Bharti, are at least 5,000 kilometers away from the southern Chile base. 2 Indian stations are themselves separated by 3,000 kilometers, भारती एंड मैत्री, बट आई वुड से हिमाद्री जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आर्टिक पे, हिमाद्री आर्टिक पे है ना, ये याद रखना. 3 है हमारे पास, जो भारतीय मैत्री ये सॉदर्न पे है और हिमाद्री है नॉर्थ पे. ओके, सो ये आपके पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि ये आ सकता है. सो अंटार्कटिका पे मैत्री है, ओके, एंड भारती, मैत्री एंड भारती. ओके, सो ओके, मैत्री एंड भारती, और उधर है तुम्हारा आपका है हिमाद्री. ओके, इट वुड बी हिमाद्री. सो हिम. सो आज अपना इंडियन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका इज नॉट वरीड अबाउट द वायरस स्प्रेडिंग. ये देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे. सो हियर यू कैन सी द इंडिया. ओके, दिस वन इज द इंडिया, यू कैन सी.
some Maitri. Here you can see the India Maitri and surrounded by the Japan, that is Swa. और यहाँ पे सैन से साउथ अफ्रीका यहाँ पे भी है. तो okay, these are the what you can see the Maitri of India. So this is very important. And here you can see the USA is having here, and Russia is Vostok also having here. That is the what Russia Vostok is having here. So okay, and this is the Ross Sea. यहाँ पे क्या है? Ross Sea. ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मराइन रिजर्व है यहाँ पे रॉस सी. इस साइड न्यूजीलैंड है, इस साइड ऑस्ट्रेलिया है. तो ये है चाइना का बेस यहाँ पे है. दैट इज द व्हाट ग्रेट वॉल. ये चाइना का ग्रेट वॉल यहाँ पे है, रिसर्च बेस आप देख सकते हो. ओके, दिस आर द नंबर ऑफ कंट्रीज. हियर इज आल्सो दैट इज व्हाट जोंगसान चाइना, यहाँ पे भी एक रखे हैं. सो ब्रिटेन का इधर है, यूएसए का भी है. So these are the what stations are also there. South Pole ये बिल्कुल है आपका South Pole. That is what Amundsen Scott South Pole USA है ना. तो यहाँ पे ये सब देख सकते हो. ये okay, major research station and the governing nation and the parent that is what parentless. तो ये बहुत ही important figure है, आपको दिखेगा कि Maitri and Bharti. What I would say Bharti. So these are the 2 points here in what I would say. देन ओके, यूके वगैरह ये सारे देश है, साउथ कोरिया वगैरह, जर्मनी, ये सब के सब ऑल द इम्पोर्टेंट कंट्रीज दे आर हैविंग बेस ओवर हियर. जल जीवन मिशन. नेक्स्ट व्हाट टॉपिक ऑफ द डे इज दैट जल जीवन मिशन. ये भी फास्ट ट्रैक मैंने अभी पढ़ाया. जल जीवन मिशन अगस्त 2019 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया था जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन का क्या होता है कि व्हाट वुड बी द टारगेट ऑफ द मिशन. जल जीवन मिशन मतलब जल ही जीवन, सबके पास जल होना चाहिए. एम आर द प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर एट द सर्विस लेवल 55 लीटर पर व्हाट कैपिटल पर डे. मतलब टारगेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टारगेट है कि 55 लीटर पर डे हम देंगे पर कैपिटल पर डे. मतलब सब लोग पाएंगे टू द रूरल हाउसहोल्ड्स थ्रू द फंक्शन ऑफ द व्हाट हाउस होल्ड टैप कनेक्शन. सबके सब टैप वाटर मिलना चाहिए बाय 2024. व्हाट आई वुड से बाय 2024 क्या होना चाहिए, टैप दैट मींस वाटर कनेक्शन सबके घर में आना चाहिए, गांव में. द फंडिंग शेयर पैटर्न वुड बी सेंटर ऑफ स्टेट का क्या होगा, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट में होगा. हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट पे इट वुड बी 9:1. मतलब 90% जो पैसा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे और 10% स्टेट गवर्नमेंट देंगे. बाकी जो जनरल स्टेट है ना वो 50-50 50-50 देंगे, स्टेट और सेंटर दोनों हाफ कर लेंगे. 100% देंगे यूटीज के लिए, 100% होगा. Under the implementation, the partnership with the state enable every rural home to have the tap water connectivity by 2024. बहुत ही बढ़िया टारगेट है, क्योंकि आपको पता है कि what the sustainable development goal है ना 2030. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है, तो दैट मीन्स उसको अचीव करना चाहिए. उसको हम कैसे अचीव करेंगे, सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू हैव. सो दैट मीन्स व्हाट दैट इज एवरी होम्स टू हैव द टैप वाटर कनेक्टिविटी बाय 2024. 2024 का मतलब हमारा टारगेट है कि बाय 2024 एटलीस्ट every household should have the tap water. ये मतलब it would be implemented through the what Ministry of Jal Shakti. It would be implemented through the Ministry of Jal Shakti. Okay. So aim of the mission क्या है, to provide the every rural household potable tap water adequate quantity and prescribed what quality regular and long term basis पे सबको पानी मिल जाएगा. Okay. So water quality testing is one of the priority areas under the Jal Jeevan Mission. Flagship programs है of the Union government का flagship program है. Since the announcement of the Jal Jeevan Mission till the 23rd of December 2020, so far I would say 2.9 crore households have been provided tap water connection, thus increasing the tap water facility 3.323 crore, 17%, and in the August 19 and 6.13 crore, 23% rural household in the country. That means हम देखेंगे कि जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है 2024 के तरह. by 2024 every household would be given that is the what as I say drinking water, tap water सबके मिलना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा कि सस्टेनेबल दैट इज द SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2030 है ना, उसको हम पूरा करने चाहेंगे.
to provide the every rural household portable water. Water quality testing is one of the priority area होगा. Since announcement of the that is जल जीवन मिशन 23 दिसंबर 2020 पे है ना, till हम बोलेंगे till 23 दिसंबर 2020 so far देखेंगे 2.9 crore household have been provided tap water. बहुत बढ़िया है, 3 crore आसपास है. और thus increasing rate क्या है, that is the 3.23 supply water from the 3.32 crore in August 2019 to 6.60, that means 33% in the rural जो population को मिल गया. Then virtual summit G20, ये भी important है. G20 आपके लिए है. G20 the virtual summit G20 also here. So we will talk about the virtual summit G20. So आपको पता है G20 is but one of the strongest organization जहाँ पे बहुत सारे important groups है. जैसे कि यहाँ पे अरब है, जापान है, साउथ कोरिया है, और कनाडा है, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ओके, मतलब दिस आर द कंट्री, ब्राजील, चाइना, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री है यहाँ पे G20 पे है. दैट इज ओके. नेशन प्लेस a united front of the fight against the COVID-19, and they committed to inject $3 trillion into the global economy to ensure the situation but that is the recession does not arise. तो इनका कहना है कि हम लोग मिल के स्टेप लेंगे. G20 का कहना है कि we will try to infuse as much as $5 trillion US dollar into the global economy so that the global economy does not recede back to the recession पे ना जाए. G20 leaders also pledged to work with the bodies such as the International Monetary Fund to deploy the robust financial package to support the developing nation and don't have access to capital market adequate, but that is the but I would say the health facilities. That means इनका जो G20 country होगा, इन्होंने टारगेट लिया है कि हाँ कुछ भी हो जाए ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन होने नहीं देंगे. हो तो गया है, मतलब रिसेशन पे ना आए, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइग्रेशन बहुत हो जाएगा, एंड पर कैपिटल इनकम खत्म हो जाए, इकोनॉमिक बहुत सारे लोग बैंकरप्ट भी हो जाएंगे, बैंक भी खत्म हो जाएगा. तो ये पूरा सिस्टम है लिंक्ड है. तो इसलिए मतलब इनका कहना है कि जिन सारे छोटी छोटी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनको हम क्या देंगे कि कैपिटल उनको प्रोवाइड करेंगे, एडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज देंगे. अफेक्टेड कंट्रीज जैसे कि जो कंट्रीज है मोस्टली अफेक्टेड थ्रू द कोविड-19 है ना, जैसे कि आप स्पेन हो गया, जॉर्डन हो गया, सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज है ना. अदर अफेक्टेड कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइन द वर्चुअल समिट, इंक्लूडिंग ये सारे कंट्री भी ज्वाइन किया था, है ना. So the leader also agrees to contribute, I would say, the WHO-led COVID-19 Solidarity Response Fund on a virtual basis. G20 was criticized recently for being slow to address the COVID-19 pandemic. अभी G20 को क्रिटिसाइज किया गया था कि ठीक से काम नहीं कर रहे, कोविड-19 को रेस्पॉन्स नहीं कर रहे है ना, इसलिए उनको क्रिटिसाइज हुआ था. तो G20 ने वर्चुअल समिट में ये टारगेट लिए हैं और ये आपको पता होना चाहिए, है ना. ह्यूमनॉइड रोबोट और व्हाट रोबोट टेस्टेड. ह्यूमनॉइड रोबोट टेस्टेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए भी टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा. ये कहाँ पे, हॉस्पिटल ऑफ जयपुर, इंडिया पे है. A series of trials were conducted on the humanoid robot at the government hospital जयपुर पे. मतलब ये ठीक से ह्यूमन जैसे काम कर रहा है कि नहीं. The trial were carried out to check out if the robot could use delivering the medicine and foods to the COVID-19 patient admitted there. तो मेरा कहना है कि why this what I would say the humanoid robot they were tested, as you are aware of the fact that is जो मेडिकल पर्सनल होते हैं ना, जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, they are also skeptical of their life as well because of the COVID threat. They are getting transmitted and the COVID warrior they are also getting what उनका भी डेथ हो रहा है बहुत सारे. तो इनके हिसाब से अब हम देखेंगे तो अभी क्या है ना कि अब क्या है कि जैसे कि इन लोगों को ज़्यादा ये लोग आई वुड से व्हाट कंटामिनेटेड ना हो, इनको बचाने के लिए तो गवर्नमेंट ने और राजस्थान सरकार ने भी बहुत अच्छे स्टेप लिया कि ह्यूमनॉइड रोबोट, मतलब रोबोट क्या ये काम जो नर्स करते हैं क्या ये रोबोट कर सकते हैं क्या. अगर रोबोट ने कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है. दैट मीन्स तो जो हमारे ट्रांसमिशन हुआ था कोविड-19 ट्रांसमिशन उसको तो हम रोक पाएंगे ना. एटलीस्ट इफ अप्रूव्ड देन रोबोट वुड कीपिंग द डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ एट द सेफ डिस्टेंस टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द डेडली वायरस आई वुड से. सो दैट क्या होगा, दैट मीन्स हमारा जो कोविड डिजीज है वो स्प्रेड वो कम हो जाएगा, है ना.
The medicals and the paramedical staff, I would say the paramedical staff are also high risk of being the infected with the virus despite wearing the protective I would say what wear, isn't it? It's a battery operated humanoid robot with a lifespan of 4 to 5 years. 4 से 5 साल तक ये काम कर सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है। 5 साल तो बहुत काफी है, मतलब ये रोबोट ह्यूमन जैसे काम करेगा, मतलब एक नर्स का जो काम वो पूरा निभाएंगे ईमानदारी के साथ। आंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एमपी लैड फॉन्ट, ये क्या है? एमपी लैड आपको पता है कि हर एक एमपी जब वो चुनाव जीत के मतलब संसद में जाते हैं एंड मतलब एनुअल एमपी लैड फंड जो होता है ना वो 5 करोड़ दिया जाता है। मतलब एनुअली अगर हम देखेंगे, ये देखो एनुअल एमपी लैंड फंड होता है इंटाइटल पर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 करोड़ 5 करोड़ दिया जाता है। इसलिए ड्यूरेबल असेट वो बनाएंगे। वो क्या करेंगे? दिस असेट बट रिलीज फंड अंडर द स्कीम नॉन लैप्सेबल, ये लैप्स नहीं होगा। द एमपी लैड हैज अ रिकमेंडेड रोल अंडर द स्कीम। द एमपी लैड्स आर फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको फंड करते हैं। जो पैसा मतलब एक साल में, हर साल में आई वुड से व्हाट 5 करोड़ दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक एमपी को खर्च करने के लिए अपनी अपने बट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। The scheme formulated by that is the government of India that enables the member by the parliament to recommend the developmental work in their constitutions. The emphasis on the what creating durable community asset based on the local felt need. जैसे कि वो लोग क्या करेंगे ना, पैसा लेके जो 5 करोड़ दिया जाएगा, each country will have 5 crores and each member will have the 5 crores that what money would be spent for the durable asset। जैसे कि कोई कैनाल हो गया, छोटे मोटे रोड हो गया, कॉलबेट हो गया, है ना, छोटे, क्योंकि कम पैसा है ना 5 करोड़। पीएम केयर फंड, ये देखेंगे एमपी लैड फंड। सो एमपी लैड फंड दैट मींस ये आपके मन में होगा कि इसलिए क्यों पढ़ा है, क्या ये न्यूज पे था? बिल्कुल न्यूज पे था। तो हमारा उपराष्ट्रपति जी है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1-1 करोड़ आप लोग दे दो कोविड फंड के लिए, है ना। 1 करोड़ एटलीस्ट दे दो, किस लिए? कोविड के लिए, कोविड-19 फाइट करने के लिए, ताकि जो 4 करोड़ पैसा होगा आपके पास, है ना, तो उसके हिसाब से हम कोविड-19 को फाइट करेंगे। ओके, पीएम केयर फंड हम देखेंगे, ये भी काफी न्यूज पे था। पीएम केयर फंड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। पीएम केयर दैट इज द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन ओके असिस्टेड रिलीफ इमरजेंसी I would say what fund, है ना, so as to deal with the COVID-19 pandemic के लिए deal करने का था COVID now the PM care fund. The primary objective to deal with any kind of emergency or I would say what district situation like post COVID pandemic। अगर कुछ भी होगा ना कि सिचुएशन डिस्ट्रेस सिचुएशन आ गया COVID-19 के बाद, तो जो पैसा होगा ना वो पैसा हम खर्च करेंगे। The fund would be also help providing the relief to affect to the affected and affected जो लोग को affected होंगे उनके पैसे दिया जाएगा। Fund would be enable the micro but also donation as well as the result fees which a large number of people would be also able to contribute with the smallest amount of denomination। बहुत कम छोटे छोटे फंड आ जाएगा। तो पीएम केयर फंड में जो पैसा आएगा ना वो कोविड-19 में खर्च होगा। Okay, so money would be spent for the COVID-19। मनी वुड बी कलेक्टेड, जो छोटे छोटे जितने भी अमाउंट आप 1000, 500, 200, 100 जितना जो बार कैपेबल है पीपल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री दे कैन व्हाट कंट्रीब्यूट, वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाहर के लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉरेनर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बिजनेसमैन सब कर सकते हैं। वो पैसा लेके हम क्या करेंगे, कोविड-19 सिचुएशन में खर्च करेंगे। जहाँ पे कहीं पे किट चाहिए, पीपीटी किट, वहाँ पे देंगे, जो भी है। Contribution by the corporate to the PM Care Fund will be considered as the what CSR expenditure under the company's law। बहुत बढ़िया है। That means जो CSR है, कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्ट है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता है, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर किसी कंपनी ने जैसे कि अदानी ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, इन्होंने पैसे दे दिया पीएम केयर फंड को, उसको CSR में काउंट हो जाएगा आज पता मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स मेमोरेंडम। ओके,
पीएम केयर फंड हम देखें, प्राइम मिनिस्टर चेयर द फंड, फंड का चेयरपर्सन क्या है, प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ। अदर मेंबर इंक्लूड द डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। So defense, home minister and finance minister, that is there's other members, so that means the high profile people would be here. Corporate social responsibilities क्या है, under the section 135 section of the Companies Act 2013, but the every company having net worth, so that is but at least 500 crore turnover, 1000 crore more, or the minimum net profit 5 crore during the immediate preceding financial year has to make the CSR's एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स अंडर द सेक्शन 135 के तरह क्या कर सकते हैं, एक कंपनी एक्ट 2013, एवरी कंपनी नेट वर्थ, जिनके पास पैसा, टोटल पैसा का नेट वर्थ होगा 500 करोड़, टर्नओवर होगा 1000 करोड़, ओके, और ए मिनिमम नेट वर्थ प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होता है, और करोड़ से ज्यादा होगा उनके लिए CSR initiative companies trust on the creating values in the life of the communities around its area, business and manufacturing operation। मतलब CSR में क्या होता है, जो कंपनी होता है ना, वो अपने सोसाइटी में लोग रहते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग द नालको, so this is the area of नालको and the periphery area of नालको, that would be, so यहाँ पे स्कूल हो गया, मेडिकल हो गया, डिस्पेंसरीज, दिस वुड बी ऑपरेटेड बाय द नालको, बिकॉज इनका ये काम है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, मीटर की वाटर, छोटे मोटे रोड है, ग्रामीण रोड, ये भी ग्राम का जो रोड है ना, ये सब दैट वुड बी डन थ्रू द CSR फंड, ओके, कंपनी विल डू इट। सो दिस आर द व्हाट आई वुड से पीएम केयर फंड का ये एक व्हाट आई वुड से क्राइटेरिया है, मतलब CSR जो है उसका क्राइटेरिया है। तो दैट मीन्स किसी कंपनी ने अगर बट पीएम केयर फंड को पैसा दे दिया, दैट वुड बी काउंटेड एज द CSR एक्सपेंडिचर। देन हिमालयन आइबेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिमालयन आइबेक्स, ओके, हिमालयन आइबेक्स, व्हाट हिमालयन आइबेक्स, ए रीसेंट स्टडी by the scientists of the Zoological Survey of India has proved that Great Himalayan Ibex is a distinct species from the but Siberian Ibex। Ibex का मतलब क्या है, ये गोट स्पीशीज है, एक गोट स्पीसीज जो हिमालय में मिलता है, एक गोट स्पीसीज है, फिश इज फाउंड इन द हिमालय, ये हिमालय भी मिलता है, जिसको बोलते हैं हिमालयन आइबेक्स। द साइंटिस्ट assume that the mountain system, that is the what mountain system which are formed due to the climatic but oscillation and temporal topographic what I would say metamorphosis might have I would say what broken off adjoining the distribution of the widespread species। मतलब क्या है, साइंटिस्ट का कहना है कि जो आइबेक्स है ना, यहाँ पे जो मतलब हिमालयन आइबेक्स जो गोट स्पीसीज है, ये साइबेरियन आइबेक्स के थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अलग है। तो साइंटिस्ट अज्यूम कि जो माउंटेन सिस्टम है, which what due to the climatic oscillation and temporal topographic metamorphosis might have broken। ये ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्टिनेंट मतलब ड्रिफ्ट हो गया, जो भी है, so might have also led to the oscillator, that is what allopatric specification because of the geographic and reproductive isolation। The study will also help the global that is the understanding of ibex डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन। आइबेक्स देख सकते हैं, ये आइबेक्स क्या है, दिस आर द वाइल्ड गोट है, बहुत बड़े बड़े इसका हॉर्न होता है, ओके, द हॉर्न वुड बी लाइक दिस, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्स हैबिटेट है इनका, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, रॉकी आउटक्रॉप से मिलता है, स्टीप टेरेन पे मिलता है, पूरा एकदम मतलब स्टीप माउंटेन पे मिलता है, हाई लैंड फ्लैट पे दिखता है, माउंटेन रीज पे दिखता है, एंड लो माउंटेन फुट हिल्स पे, पूरा माउंटेन रीजन पे रहता है। हिमालयन आइबेक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द ट्रांस हिमालय रीजन, जम्मू कश्मीर पे है, लद्दाख पे, हिमाचल प्रदेश पे है। सो ये क्या है, लीस्ट कंसर्न है, मतलब इनका पॉपुलेशन ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, इसको आप देख सकते हो, गोट जैसे दिखता है ना, दैट मीन्स व्हाट हमारा गोट जो होता है वो वाइल्ड है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भी होता है, एंड दे आर आल्सो मोस्ट स्ट्रॉन्गर, बट दे आर हैविंग देयर एनिमी, उसका एनिमी क्या है, दैट इज द लेपर्ड्स,
एंड टाइगर, स्नो टाइगर एंड लेपर्स, दोज हुआ तो हिमालय पे है, वो उनका शिकार करके खाते हैं, आइबेक्स को खाता है उन लोगों ने आइबेक्स को, सो दे हंट द आइबेक्स. ओके, just a minute. तो ये था हिमालयन आइबेक्स के बारे में, है ना. सो दिस आर द गोट स्पीसीज, एज आई सेड यू कि दिस आर द गोट स्पीसीज है, ये हिमालय रीजन पे मिलता है ना. सो ओके, सो देयर स्टैटिस्टिक्स लिस्ट कंसर्न है. सो यू कैन सी दिस वन, दिस इज द क्वाइट, ये स्टीप मतलब ये बहुत देख सकते हो. दिस आर द गोट आइबेक्स, ये गोट है. दिस आर द हॉर्न्स, such a strong horn they are having, very strong horn. The weapons, they fight with their horn. They can reside in the steep mountain slope पे चढ़ सकते हैं, ये उनका कोई दिक्कत नहीं. ये आराम से जो steep mountain slope है ना, यहाँ पे easily they can ride it, they can okay. So ये बहुत खतरनाक भी होता है अपने आप. इनके कम्युनिटी में फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं ये लोग कम्युनिटी में. Okay, this is, you can see the monster is here. So then Nidhi Prayas program, we will talk about the Nidhi Prayas system, that is the national initiative for the development and the harnessing the innovation. Nidhi, national initiative development of harnessing innovation, is the umbrella program conceived and developed by the Department of Science and Technology, Government of India, for the nurturing the ideas and innovation, knowledge based and technology driven into the successful startup. Under this initiative, the DTS has launched this Nidhi program, that is as I said, development, harnessing innovation and translation young and aspiring innovators and startups. Okay, Nidhi Prayas. The program caters to that is what idea stage entrepreneurs with a physical, I would say what, product offering. It would also facilitate the innovators with the physical infrastructure, technical guidance and business mentorship as well. So that is Nidhi Prayas programs, I would say. सो निधि प्रयास इस मतलब जो प्रोग्राम है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हार्नेसिंग इनोवेशन, ये हमने बोल दिया कि प्रोग्राम कैटर फॉर द आइडियल स्टेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कैसे डेवलप होगा एंटरप्रेन्योर को एजुकेशन देना, ये सारे जो होगा, है ना. उसके बाद हम देखेंगे अब बंगाल वाला पार्ट में देखेंगे, थोड़ा बहुत बंगाल का भी हम देख लेंगे, करंट अफेयर क्या क्या था. सो व्हाट दैट इज स्वास्थ्य साथी स्कीम, ये बंगाल गवर्नमेंट का अब हम पढ़ेंगे. बंगाल गवर्नमेंट का कुछ स्पेशल स्कीम है बंगाल गवर्नमेंट का. ओके, इसको हम भी देख लेंगे. ओके, सो स्वास्थ्य साथी स्कीम. स्वास्थ्य साथी स्कीम इज ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये हो गया हेल्थ, दैट इज द इंश्योरेंस. इट वाज
लॉन्च 2016 पे. It was now been expanded over the state entire population. सबको सब हो गया. It will provide basic health cover for the secondary and tertiary care up to 5 lakhs, that is the what per annum, okay, per family. मतलब स्वास्थ्य निधि मीन्स क्या है? So it would be a health insurance schemes supported by the West Bengal government ने किया है for the what 5 lakhs family per family सबको दिया जाएगा, है ना. So both state run and the private hospitals सबके सब होगा. That means मैंने ये पहले भी पढ़ाया था आपको कि it would provide basic, जो कि हमें ये सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए. किस लिए होगा? सेकेंडरी टर्शियरी. तो स्वास्थ्य निधि स्कीम सिंपल, हम स्वास्थ्य साथी स्कीम सॉरी आई वुड से तो प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर कवर फॉर द सेकेंडरी टर्शियरी केयर के लिए 5 लाख दिया जाएगा पर फैमिली पर annum. 5 प्रत्येक साल दिया जाएगा, है ना. बोथ स्टेट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल द कार्ड अंडर द स्कीम इज इशूड और द व्हाट फीमेल गार्डियन ऑफ द फैमिलीज. मतलब जो घर के सबसे एल्डेस्ट वुमन होगा उनके नाम पे होगा कार्ड. 5 लाख मिल जाएगा हेल्थ केयर के लिए. बैकग्राउंड अब देख सकते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसको मतलब मना कर दिया कि उन्होंने बोले कि नहीं हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, आप ना करेंगे. तो अपना उन्होंने कह दिया इसलिए स्वास्थ्य व्हाट आई वुड से दैट इज द व्हाट साथी स्कीम इन्होंने बनाया खुद के लिए. ओके, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज ऑल्सो गो फॉर द इलेक्शन 2021 पे इलेक्शन पे जाना है, इसलिए उन्होंने बोले सोचे कि थोड़ा अपनी तरफ से कर ले. द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन ऑल्सो but lately launching several schemes for the expanding existing scheme in the limelight of the existing scheme को भी वो expand कर रहे हैं ना इलेक्शन की तरह उसको. The West Bengal government recently launched a scheme क्या है, जैसे कि द्वारे सरकार कैंपेन, है ना. द्वारे सरकार मतलब सरकार घर पे आएंगे. आप लोग जो ऑफिशियल है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल they will comes to your house, they will make you understand what are the things you need, the service you want to avail, that would be avail to you. Okay, so these are the benefits that are going to have, that is the peoples. Okay, simple keeping in the eye of the election 2021 पे जो इलेक्शन है उसको आई पे रखे हुए इस तरह काम करते जा रहे हो. तो हर कोई करता है ना, उसको छोड़ दो, हमारा बिजनेस नहीं है. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द्वारे सरकार विच इज द गवर्नमेंट सर्विस आर टू बी व्हाट प्रोवाइडेड एट द डोर स्टेप. मतलब गवर्नमेंट सर्विस, ये बिल्कुल गवर्नमेंट सर्विस है, ये पूरा घर घर में पहुंचा जाएगा सबको. So what are the expand of the feature of the Swasthya Sathi scheme? And देख सकते हैं every citizens, every family of the states are to be included into the scheme irrespective of their age. सबको सब मिलेंगे. The scheme is to be completely funded by the state government of the West Bengal. सारे के सारे पैसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खर्च करेंगे. Scheme will provide a smart card to each family of the state to avail the benefits. To avail the benefits under the scheme. The smart card to be also issued in the name of the what I would say that is the women of the member of the family. All private and the state-run hospitals are to be brought under the scheme. सबके सब आ जाएंगे under the scheme. The state government representative will visit every household to complete the enrollment procedure. This would be to the done under the what I would say द्वारे द्वारे है ना पश्चिम बंगो सरकार initiative. What द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो what I would say सरकार initiative. The state government of the West Bengal is to collect 2,000 crore of the rupees to implement the scheme. So far 1,559 hospitals have been expanded in the schemes. The scheme will also cover 1.5 crore families. 7.5 crore for people would be also engaged. Next I would say द्वारे सरकार. द्वारे सरकार. The द्वारे सरकार means the government official will comes to your home and they will make avail the government services. Outreach of the government. So then एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ कलर so that it will be easily pointed out. So द्वारे सरकार हम देखेंगे that would be launched by the Bengal government ने under the program. The campaigns are to be organized local body level पे किया जाएगा. Local body level पे in the cities camps are to be organized by the corporator, that is the what, and the village पे village पंचायत ग्राम पंचायत करेंगे. So द्वारे सरकार का मीनिंग क्या? द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार means I would say so what government official, all the government scheme, all the government facilities which is delivered or which is extended to the population of the Bengal, all the scheme would be reached to the foothills. To the what? Foothills, to the बारंडा. द्वारे मतलब कौन? द्वारे घरे घरे पहुंचेबो है ना, पहुंचाएंगे.
तो लोकल बॉडीज आई वुड से इधर इट वुड बी आई वुड से कॉर्पोरेशन हो गया, विलेज पंचायत हो गया, इन्होंने जाएंगे पूरा घर घर कैंपेन करेंगे हॉस्टल फ्रॉम द December 1st of the 2020 to the January 30th of the 2020 through this camp the state government will what take the government service to be doorstep of the Bengal people. Okay. In simple words, the people of Bengal can avail the benefits of the different government schemes through the what camping being under the program. जैसे मैंने बोला कि फ्लैगशिप्स हो गया, नरेगा हो गया, जैसे कि इंक्लूड्स अंडर द what I would say what कल्याण श्री हो गया, शिक्षा श्री हो गया, देन what खाद्य साथी हो गया. सो ये सारे जो स्कीम हो गया है ना, नरेगा हो गया, देन what अक्षय श्री हो गया, ये सारे है ना, देन तपोसिली बंधु हो गया, रूपश्री हो गया, ये सारे स्कीम है वेस्टर्न बंगाल का और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, ये सारे स्कीम है, इनको पहुंचाए जाएंगे सबके घर में. और ये थोड़ा देख लीजिए आप ये सारे स्कीम के बारे में. व्हाट आर द स्कीम इज बीन फ्रंट इन द द्वारे सरकार के अंदर कौन सा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. फर्स्ट तो है तुम्हारा कल्याण श्री, मतलब कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स एम्स टू द व्हाट रिटेन द गर्ल एट द स्कूल प्रिवेंट द अर्ली मैरिज. कल्याण श्री मतलब सबका कल्याण हो. ये जो बच्चे हैं ना जो स्कूल छोड़ के आ रहे हैं है ना, है ना. तो जो बच्चे स्कूल छोड़ के आते हैं उनको रिटेन किया जाएगा ताकि वो लोग वहाँ पे रह सके, देन व्हाट पढ़ सके. देन खाद्य साथी मतलब फूड है ना. सो प्रोग्राम एम्स टू मेक श्योर दैट 90% ऑफ द पॉपुलेशन कम अंडर द फूड सिक्योरिटी के अंडर आ सके, है ना. देन शिक्षा से प्रोग्राम क्या है, ऑफर वन टाइम ग्रांट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट स्टडिंग 5 से लेके 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको क्या जाएगा, उनको शेड्यूल कास्ट जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट होते के उनको पैसा दिया जाएगा. दो शिक्षा श्री जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे क्या होगा, वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा. ग्रांट मतलब समझते हो आप पूरा, मतलब ये लोन नहीं है, ग्रांट मतलब जो देंगे और वापस नहीं देंगे. तो खाद्य साथी में क्या होगा, वहाँ पे मतलब फूड मेक्स इंश्योर के 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल आर गेटिंग फूड. शिक्षा श्री पे आपको पैसा देंगे, वन टाइम ग्रांट देंगे, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट बच्चे के पैसा देंगे क्लास 5 से 8 पढ़ने के लिए. देन रूपश्री प्रोग्राम हो गया शादी के लिए, वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट 25,000 रुपीज टू प्रोवाइड दैट इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग देयर डॉटर मैरिज. व्हाट बच्चों के जब शादी करवाना है ना कि बट आई वुड से व्हेन द यंग गर्ल्स एंड द आर बट हैव टू गॉट मैरिड, मतलब जो घर में जो लोग होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, वो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं क्योंकि पैसा कहाँ से लाएंगे मैरिज के लिए. सो दैट इज लाइक उड़ीसा गवर्नमेंट ऑल्सो हैविंग है ना 50,000 रुपीज एक्सटेंडेड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट हियर ऑल्सो. So I would say these are the good initiative. Hope how much people are getting benefit of this. So let's hope for the best, and time would be best as well. Then I would say what the joy, the what that is joy johar scheme. So एक मिनट में थोड़ा अपना कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, so that it would be more visible. What the next is that joy johar. The scheme work for the betterment of the scheduled tribes. तो जॉय जोहार जो स्कीम है, दिस स्कीम्स इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है. ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए. ओके, जय जोहार क्या है, दैट वुड बी फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना. इट वुड बी फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. देन व्हाट शेड्यूल ट्राइब्स बच्चे के लिए है, सो बेटरमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स जय जोहार. देन तपोसिली बंधु, ये भी एक पेंशन स्कीम है शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए. ये भी पेंशन स्कीम है ताकि शेड्यूल कास्ट का जो लोग है ना उनको बेनिफिट मतलब मिल सके. जैसे पेंशन स्कीम फॉर द व्हाट शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए. देन हम देखेंगे अक्षयश्री प्रोग्राम. उसके बाद क्या देखेंगे, अक्षयश्री प्रोग्राम. So accessory program उसको देखेंगे, provide the scholarship to the students belonging to the
I would say minority community in the state. So अक्षय श्री जो प्रोग्राम है ना, it provides scholarship दिया जाता है to the students belonging to the minority community in the state. Apart from these, the schemes, the campaign will also focus on scheme related to the pension, widows, person with disability. तो अपार्ट फ्रॉम द स्कीम अगर हम देखेंगे ये जो अक्षय श्री हो गया कि अक्षय श्री प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए पढ़ने के लिए दिया जाएगा. सो दिस मनी वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द what the learning approach. Apart from this scheme, the campaign would be focused on the scheme related to the pension, जैसे कि लोअर क्लास का सेक्शन के हो गया ना, उसके स्कीम डिजेबिलिटी के हिसाब से पर्सन विडोज इनको भी पैसा मिल जाएगा. दैट इज द अक्षय श्री प्रोग्राम से यहाँ पे भी पैसा मिल जाएगा. ओके So that means अब हम देखेंगे what is the plan. प्लान क्या है कि the camp would be set up under the program that is the द्वारे द्वारे सरकार to benefit the different government scheme and उसका जो सर्विस है ना, so उसको क्या हो जाएगा. So the camp would be set up under the program, so delivery would be benefited. Okay. So इसमें क्या होगा कि the standard of the operation procedure for the program is prepared by the West Bengal government. गवर्नमेंट का कहना क्या है कि जैसे कि मतलब हर घर में सबको मतलब जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए. तो कैंप टू हेल्ड इन द 4 फेजेस होगा. एक्सपीरियंस 1 फेज में एक्सपीरियंस होगा. जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना उसको हम सेकंड फेज में यूज करेंगे, सब्सिक्वेंट फेज में यूज करेंगे. So West Bengal announced what several initiative for the SC and ST peoples in the state. बहुत सारे स्कीम उन्होंने भी मतलब जैसे कि November 4, 2020 में वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अनाउंस द नंबर ऑफ इनिशिएटिव फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड रिफ्यूजी पॉपुलेशन आज वेल. इनको लिए कुछ मतलब इन्होंने क्या क्या स्कीम किए हैं. दिस इंक्लूड दैट इज द पट्टा, जैसे कि लैंड पट्टा है ना, जो लोग के पास घर नहीं ये पट्टा, ये सब तो इलेक्शन के मतलब जैसे है ना जस्ट मतलब इन चीज़ों को मतलब नॉन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे टॉक बिफोर द इलेक्शन मतलब after the election, just when the election are approaching, that times they talk about the big talks are done and getting of the cultural development on the board as well. cultural development board को भी ये लोग क्या करते हैं. so that means इन लोगों को कैसे benefit होगा, how they will get benefit from this. okay, इन लोग कैसे benefit पाएंगे.
सो जैसे कि लैंड दिया जाएंगे, है ना, सेटिंग ऑफ कल्चरल, ओके, ये सब चीज़ें इनको दिया जाएगा। की हाईलाइट्स देखेंगे, द इनिशिएटिव ऑफ इंक्लूड्स ऑल द रिफ्यूजीज कॉलोनीज टू स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट, है ना, सारे जितने सारे रिफ्यूजीज कॉलोनीज अक्रॉस द अराउंड 1,28,000 लैंड पट्टास आर टू बी प्रोवाइडेड। जितने सारे लोग रिफ्यूजीज है ना, सबको पट्टा दिया जाएगा। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो so what the state government will also provide 25,000 लैंड पट्टा टू द रिफ्यूजीज को भी देंगे, मतलब टोटल 25,000 रिफ्यूजी को देंगे और 1,25,000 ये मतलब ये, तो ये सारे पट्टा भी दिए जाएंगे। 10 crore has been allocated for the newly announced Matua Development Board. What Matua Development Board? Matuas are the Dalit refugee from the Bangladesh. ये बहुत important है। So Matuas are the what? Dalits. The Dalit refugee from the what? I would say that Bengal से आते हैं. Also development and the cultural boards to be created for the 3 ST communities in the state. That is the what? Bauri और Thule. Bauri लोगों के लिए, namely the Bauri, Machis and Bagdis, इन लोगों को लिए भी. So this is being done by the reserve in the cultural heritage. इनके लिए भी किया जाता है। कम्युनिटी हॉल भी बनाए जाएंगे लोगों के लिए, to be constructed in the दैट इज व्हाट छो डांसर। आपको पता है पुरुलिया पे है छो, और ये छो डांसर कहाँ पे दिखता है? बंगाल पे मिलता है, पुरुलिया पे, और ये उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पे दिखता है, एंड ऑल्सो आई वुड से झारखंड। ओके, सो देन व्हाट धोकरा आर्टिस्ट टू बी ब्रॉट अंडर द स्वराजिस्ट साथी स्कीम। तो ये सारे स्कीम होगा। तो स्वराजिस्ट साथी स्कीम आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्या है? द स्कीम लॉन्च इन 2016 सो एक मिनट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बेनिफिट है? हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा अप टू 1.5 lakhs per annum. The illness such as cancer, cardiac surgery, neurosurgeries, blood disorder, liver disease, इस सब अंडर द मतलब जो द्वारे सरकार और ये स्वास्थ्य साथी स्कीम में हो जाएगा, है ना, सबके सब स्कीम हो जाएगा। द एंटायर प्रीमियम ऑफ द स्कीम इज बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट देंगे। इट इज व्हाट इज अ धोकराट? सो an ancient technique to what producing the non-ferrous metal, that is what non-ferrous metals were using metal casting process. The process is believed to be 5,000 year old. The artisan makes animal jewelry. ये सब धोकरा आर्टिस्ट क्या करते थे? 5,000 साल पुराना क्या जाते हैं इन्होंने क्या था? एनिमल्स ज्वेलरी, डेइटीज वगैरह, फिगर्स यूजिंग द आर्ट, ये सब करते थे ये लोग। ओके, जो धोकरा आर्टिस्ट है। सो स्वास्थ्य साथी स्कीम पे क्या होगा? दैट मीन्स व्हाट? इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। देन मोटवा डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? मोटवा द व्हाट? एज आई सेड दे आर द पीपल्स ऑफ द बांग्लादेश से आ गए ना, उनके लिए डेवलपमेंट, मतलब उनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड होगा। कैसे? ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा उन लोगों की। दिस डेवलपमेंट बोर्ड विल इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव but communities. So Motwa, they have gone with Bengal set up development board for the Motwa communities. But नामाशूद्र कम्युनिटी ये क्या है? नामाशूद्र कम्युनिटी, ये नामाशूद्र बांग्लादेश है। बट नामाशूद्र कम्युनिटी बांग्लादेश, ये रिफ्यूजी है, दे द रिफ्यूजी कम्युनिटी। दे वुड बी गिवन पट्टा, इनको भी पट्टा दिया जाएगा, लैंड राइट, and they would be given all the benefit of the scheme which has been run by the state government. Okay,
ये था आज का सेशन एंड मतलब बहुत ही बढ़िया था। यू कैन हैव द बट थोड़ा सा हम देखेंगे तो क्या क्या आज हमने पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें हमने आज कवर किया है। मोर देन 60 स्लाइड आई हैव कवर ऑफ, है ना। जैसे कि चाहे ये प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, कि जैसे कि इंडिया डेटा रिले सैटेलाइट हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड मैंने पढ़ाया, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जैसे गगन मिशन, उसाम का सुलेमान भी पढ़ाया, गगनयान मिशन पढ़ाया, भीमा कोरेगांव भी पढ़ाया। तो रिकैप 2020 के फास्ट में हमने आज ये सब सारे पढ़ लिया। फिर क्या पढ़ा हमने, प्रवासी भारत दिवस पढ़ा, रन अप उत्सव पढ़ा, ग्रीन क्रेडिट स्कीम पढ़ाया, मैंने इंटीग्रेटेड स्टील हब पढ़ाया ईस्टर्न इंडिया पे, इंडियन कोस्ट गार्ड जेट एनी वेसेंट और राजकुमारी अमृत कौर के नाम पे, डेजिग्नेटेड WHO डेजिग्नेटेड क्या वो हमारे जो 2020 ईयर को ईयर ऑफ द नॉर्थ एंड मिड, ये भी पढ़ाया। देन मन दैट इज व्हाट मंदव थाकर बिकम्स वर्ल्ड नंबर वन, दैट इज व्हाट जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हो गए। देन इंडिया का दैट इज व्हाट मालमनाथ पूर्णा स्केल अंटार्कटिका हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज ये मतलब मैंने बोला था ये इन लड़कियों से मतलब सारे मतलब फ्रॉम 5 कंटिनेंट्स का ले लिया, बस नॉर्थ अमेरिका बाकी पड़ा है उसको भी कर लेंगे। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियली लॉन्च यूएस स्पेस फोर्स भी कर दिया। देन एनुअल हमने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसका क्या क्या रिपोर्ट वो निकालते हैं, सारी रिपोर्ट यहाँ पे है, जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म हो गया ये सब। देन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल वोटर राइट डे हो गया, है ना, दैट इज द 25 जनवरी, 25 हो गया। देन इंडिया ड्रॉप्स 10 पॉइंट्स इन डेमोक्रेसी इंडेक्स पे कम हो गया, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया। देन ये आप देख सकते सारे ऑर्गेनिक, है ना, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ओके ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स ये भी आप देख सकते हो। This one, human freedom index recently faced 111 point, okay. Then among the 189 countries, ये then India ranked top, what I would say top 50 nation in the global innovation index, New Delhi, okay. India rank 50 global, that is what, ये global intellectual property right जो है ना, यहाँ पे इसका प्लेस भी ये देख सकते हो। देन टाइगर, ये भी टाइगर रिपोर्ट भी हमने देख लिया, है ना, टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट गौशाला, ये एमपी ने क्या है। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 मतलब 6000 2000 करके रिन्यू हो गया। प्रधानमंत्री श्रम निधि जैसे कि मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर है इनके लिए। नीफा वायरस ये भी हमने देखा मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह एरियाज में। एनवायरमेंटल आउटलुक हमने देख लिया कि 3 ट्रिलियन हेल्थ केयर पे खर्च होगा इंडिया में, तो इसलिए हमें 6 एडिशन ऑफ द व्हाट, उसके बाद हमने देखा कि 6 एडिशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। वेस्ट नाइल वायरस हो गया, सीरिया जो गोलन हाइट वाला इशू मैंने ये भी समझाया था, ये पूरा समझाया था मैंने, है ना, इस साइड है तो आपका सीरिया, और ये इसराइल ने इसको लेकर रखे हैं। इसरो का PSL भी हो गया, कार्बन क्रेडिट ये भी सिस्टम मैंने पढ़ाया, साइन दैट इज व्हाट साइन एक्स ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों भाई के बीच में है, मतलब भाई मतलब पाकिस्तान और चाइना, है ना, ये भी सारे हैं। तो ओके, देन सो कार वेटलैंड लद्दाख पे ये भी तो क्या कि सॉल्ट लेक था ये, है ना, ये भी हमने देख लिया। फिर रामसर कन्वेंशन ये भी हमने देख लिया कि रामसर कन्वेंशन, है ना, तो इसके क्या क्या है, उसका कितने सारे मतलब 42 रामसर कन्वेंशन है, ये भी हमने देख लिया। फास्टैग भी देख लिया। अंटार्कटिका ये जो प्लेसेस मैंने बोला कि अंटार्कटिका की ये भी सब हमने देख लिया। तो जल जीवन मिशन, है ना, पूरा ह्यूमन वर्ल्ड एम्पायर केयर फंड पीएम केयर IBEX भी ये भी पढ़ाया मैंने, पूरा की पूरा पढ़ाया, है ना, सबके सब पढ़ाया, ऐसे कुछ नहीं छोड़ा। सो व्हाट, तो ये हो गया आपका लास्ट स्लाइड, आई वुड से व्हाट। सो डोंट फॉरगेट टू व्हाट, आई वुड से, एक मिनट,
So don't forget to what अरे यार don't forget to like it, share it, and subscribe it. Use my code SS99 to get the 10% off instantly. So hope this lesson was comment me and also okay comment me कैसे लगा आपको ये लेसन कैसा था और ये आप सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ना. लेट्स क्रैक Bengal exam. That's all the end of the today's lesson. Thank you all everybody.